हेलो वेलकम बैक टू ऑलमाइटी ब्लूज एफसी, अ फैन चैनल फॉर ऑल टू सी। और यस भाई, वो घड़ी आ गई है। फाइनली द पॉटर एरा इज गोना बिगिन। लेकिन उससे पहले बहुत सारा चीज होने वाला है, बहुत सारा चीज हो चुका है, तो हम इसीलिए जल्दी है थोड़ा, सो दैट वी कैन डिस्कस अ लॉट, बिकॉज यस वी डिडंट गो लाइव अर्लियर टुडे। सो एवरीवन इन द चैट, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक फॉर जॉइनिंग। और अगेन डू नॉट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन। यस आई नो कपल ऑफ मैचेस अभी भी चल रहे हैं एज थिंग्स स्टैंड, और मैं सोच रहा था शुड आई डू द मिलान वॉच अलोंग एज वेल टोटल, लेकिन भाई सेकंड हाफ तो डेफिनेटली साथ में कर ही सकते हैं। और यहाँ पर मुझे लग रहा है राफेल लिया होगा, थोड़ा सा इंजरी लग रहा है, लेट्स सी। मतलब मेरी यूसीएल फैंटेसी टीम में, नॉट दैट आई वांट हिम नॉट डूइंग वेल फॉर मिलान एनीवे, लेकिन हाँ मतलब अगेन जैसे मैंने बोला है, चेल्सी मिलान बीइंग इन द सेम ग्रुप ई में, आई वुड स्टिल वांट चेल्सी टू काइंड ऑफ ट्रायम्फ। और भाई कल बवाल मचा था ऑब्वियसली, बायर्न बारसा एंड ऑफ कोर्स लिवरपूल का मैच भी, तो विल बी डिस्कसिंग अ लॉट ऑफ इट। तो बने रहना लास्ट तक। और अगेन जो भी आ रहा है चैट में, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लव टू नो भाई विच क्लब डू यू सपोर्ट, सो इफ यू कैन जस्ट पुट इन अ क्विक कमेंट दैट कौन सा क्लब और कौन सा मैच आप लुकिंग फॉरवर्ड कर रहे हो आज के लिए, तो दैट विल बी ग्रेट इन द चैट एब्सोल्युटली। एंड यस डेरेन, बिग अप, कैसे हो भाई? मतलब ऑलवेज गुड टू सी यू। यस अभी आ गया। आई वाज थिंकिंग लेट्स गो हाफ टाइम पे, लेकिन एनीवे आई वाज लाइक नहीं थोड़ा सा क्विकली डिस्कस कर लेते हैं ये गेम भी। बाय द वे जीरो इज टेकिंग अ फ्री किक एज वी स्पीक, राइट? हाय मिराज, कैसे हो? हाउ इज मिलान प्लेइंग टिल नाउ, गुड और बैड? यू नो व्हाट, टू बी ऑनेस्ट पेनल्टी है और भाई राफेल लियो का पेनल्टी था, आई मिस्ड इट। वो इंजरी जो थी भाई, पेनल्टी थी, और जीरो इज टेकिंग द पेनल्टी। ओ माय गॉड, जीरो स्कोर्स मैन। सही प्रेडिक्शन निकली है हमारी, लेकिन गुड फॉर मिलान मैन। जीरो को डेफिनेटली बिग थम्स अप मिलता है भाई। चैंपियंस लीग एंड जीरो गोल, इट्स लाइक वाटर इज वेट ऑलमोस्ट, बोल सकते हो। लेकिन अगेन मिलान वन, जाग्रेब जीरो। ये इतना मैं बता सकता हूँ कि भाई व्हेन इट कम्स टू यू नो जाग्रेब, यार उनका जो विंग प्ले हो रहा है ना, राइट विंग, बहुत अच्छा खेल रहा है। लेकिन आई थिंक ओवरऑल ऑर्सिच भी ऑब्वियसली, लेकिन मिलान का आई हैव लव दैट मिडफील्ड यार, जो है मिडफील्ड, टोनाली, इब्राहिम डियाज और बेनेसर का जो है, मतलब आई हैव लव दैट मिडफील्ड। आप लोग बोलिए अगर आप देख रहे हो तो, व्हाट हैव यू लाइक द बेस्ट व्हेन कम्स टू मिलान और जनरली इन द मैच? एंड ऑफ कोर्स दूसरे मैच में पहले 1-1 है। मुद्रिक आई हैड रिकमेंडेड कि भाई आप लीजिए सब लोग, लेकिन मैंने खुद नो फैंटेसी टीम में नहीं लिया है मैंने। कोई क्या बोले? अरे अंकित भाई, अरे सायन कैसे हो भाई? बिग अप एब्सोल्युटली। थैंक्स एब्सोल्युटली यार, बिल्कुल बिल्कुल। और यस भाई बाकी लोग जो देख रहे हैं सब लोग कमेंट कर दीजिए भाई, कौन सा मैच यू वुड बी लुकिंग फॉर टू आज। एंड ऑफ कोर्स आई एम अज्यूमिंग चेल्सी वाला है ही, बिकॉज इट इज अ न्यू एरा, एब्सोल्युटली न्यू एरा। लियो असिस्ट, वाओ, व्हाट्स द स्कोर भैया? अगेन इट्स 1-0 टू मिलान, टू 1-0 अगेंस्ट जाग्रेब, और 1-1 दैट इज बेसिकली शाख्तार वर्सेस सेल्टिक. Ankit, my opinion on yesterday, the penalty was not given to Dembele, and not only Barca match but the season. Why referee are so poor and VAR is bad? बिल्कुल. So प्रेम, मैं यहाँ पर I am sharing that. I am planning to cover that as well. Don't worry about it. Messi in the house. Talk about Barca. कैसे हो भाई? Always good to see you. Members of Almighty Blues FC, Darren Messi in the house. और वैसे भाई और लोग को ला दीजिए भाई, hitting the like button and of course sharing if possible. Milan midfield oozes control. Love to watch them. बिल्कुल बिल्कुल. Tonali, Ibrahim and Kova in midfield. Wow. Excited for Chelsea. Keeping an eye, बिल्कुल CFC Blues, big up, keeping an eye on both Chelsea and Real games tonight. Okay, PSG versus Maccabi Haifa, Messi hat trick today confirmed, here we go. Okay, चलो तो भाई कहां से शुरू करते हैं? यहाँ पे हाफ टाइम हो चुका है एंड इट इज 1-0 फॉर मिलान, लेकिन वी हैव टू, आई नो विल कम टू बायर्न बारसा, विल कम टू लिवरपूल, आयाक्स भी थोड़ा सा बात करेंगे जो हुआ था, एंड विल बी टॉकिंग अबाउट मैन सिटी, पीएसजी, रियल मैड्रिड के गेम्स एज वेल। लेकिन यार कम ऑन, लेट्स बी ऑनेस्ट, I think it has to be the Potter era. Potter ball in the house, people. Come on, Aj. So, are you excited really, or are you like still warming up like me to Potter? Again, a quick reminder what Potter is looking for in this team. ठीक है, ये इन्होंने शेयर किया है. Of course, in the last 24 hours बहुत सारा Todd Boehly रिवील किया, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. Certainly, I'll be showing it to you for people who might have missed it. ये देखिए, I want a tactically flexible, attacking, possession-based team. Players that are brave, that aren't afraid to make mistakes, that can get on the ball and show courage and really try to enjoy football. So this is Potter ball, simply put, right? I know easier said than done. लेकिन based on this, ठीक है, based on this, मैंने जो predict किया था ना, in terms of basically what Potter might play. Again, आप लोग बोलिए, it is Chelsea against Salzburg, right? आप लोग बोलिए what is the 11 that, मतलब considering last 24 hours जो गए हैं and जो statements है by Potter, by Boehly, क्या लगता है 11 which will play? Of course in the few minutes will be out definitely, लेकिन यार मैं यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ मेरा लाइनअप. अगेन मेरा लाइनअप
considering जो पॉटर ने बोला है and all that, you know, and of course जो हुआ है off field as well. So this is what I'm thinking. आप लोग क्या बोल रहे हो? मतलब agree, disagree? Again, I did cover it in the preview. I don't think मैंने change किया है कुछ majorly. So but हाँ, ये एक चीज है कि not just Kante, Mendy is also not in. Yes, Mendy. I think Potter has confirmed in the press conference कि Mendy is also not in. अब हो सकता है कि यार इंजरी हो या हो सकता है just giving a break, you know, come with a fresh mind हो सकता है, या तो हो सकता है इन Kepa is number 1. अब वो debatable है, but इन्होंने बोला है कि you know Mendy may not be available as well as Kante. तो again, I am going with this, the reason being that एक है 3 the back, Potter played, you know, Brighton, plus एक बोलते हैं ना, मतलब I want players who are, you know, ready to take that, you know, they want that एक courage. और यहाँ पर मिडफील्ड हमारी ऑलरेडी लैकिंग है, सो दैट्स व्हाई आई एम एक्सपेक्टिंग अ विंग बैक सिस्टम जहां पर दे कैन ऐड ऑन टू मिडफील्ड, प्लस अमाउंट वुड बी एबल टू ऐड देयर. आप क्या बोलते हो? अलोंग विद स्टर्लिंग ऑफ कोर्स. देखते हैं आप लोग क्या बोल रहे हैं कमेंट्स में. अंकित भैया, व्हाट यू यूज फॉर हेयर? इट्स ऑलवेज स्टैंडिंग. कुछ नहीं भाई, अपना हिंदुस्तानी तेल है और पानी, और कुछ नहीं भाई, और कुछ नहीं है, सिंपल. हेलो हेलो तन्मय, कैसे हो यार? नर्वस तो भाई अगेन, मतलब आई एम नॉट श्योर अबाउट नर्वस, बट आई एम लुकिंग फॉर टू सी व्हाट हिज टैक्टिक्स आर, रियली स्पीकिंग. De Bruyne उस पर डेफिनेटली आएंगे. टॉड बॉली का कुछ जो है. अंकित भाई, यार मुसियाला को देख के दुख होता है, आज भी इतने कम में कैसे चला गया. दैट्स अ रियलिटी यार, क्या बोल सकते हैं. डू यू थिंक बाहुबली would start after pathetic performance? I think he would. I would start Koulibaly in my opinion. I will go for Havertz. Okay, interesting that. Again, thanks for coming on. भाई भूलना मत to subscribe as well as to like the stream. What CFC fans expect for tonight games at least? यार मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ नॉट मच चेंज, टू बी वेरी ऑनेस्ट. हाँ, मतलब ओवरनाइट में आप सोना नहीं उगा सकते हो. लेट्स ऑब्वियसली दैट थोड़ा सा ट्रांजिशन में टाइम लगेगा, लेकिन क्लियरली आई थिंक पॉटर इज नॉट सो एज इन डिफरेंट टू टूकल इन टर्म्स ऑफ टैक्टिक्स. तो वहां पे मुझे लगता है दैट ही माइट एक्चुअली टेक दैट इनटू हिज एडवांटेज, और फिर बेसिकली he'll build on that. That's what I really feel. I think Zakaria or Alsi play instead of Georgie. Interesting. Again, physical element है, तो I won't disagree there. बिल्कुल. कोविचिच को हाफ टाइम के बाद आना चाहिए, स्ट्रेटेजिक एंट्री. वेल, लेकिन भाई शुरू कौन करेगा? आशीष बिगला यार, कैसे हो? Jorginho will not play. Zakaria or Gallagher will start. Again, Gallagher is number 6. I doubt. I rather don't want to see him there. Like, let's see. अरे almighty push यार, nice to see that. Todd Boehly plans for club looks very promising. चलो उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं. CR7 Galaxy in the house, and of course हम बात करने वाले हैं about Barca, about Man City, about PSG and what not. लेकिन again, focus right now for the stream is this. अभी I want even neutral opinion. आप लोग क्या सोच रहे हो इसमें? अब अगेन yesterday मैंने कुछ शेयर किया था about vision, और यहाँ पे क्विकली मैं शेयर कर लेता हूँ. बहुत ही लंबा इंटरव्यू है, तो आई कैन नॉट शेयर एवरीथिंग एंड एनीथिंग अबाउट फ्रॉम द इंटरव्यू. लेकिन एक चीज मैं जरूर बोलूंगा, दैट एक प्लान तो है, ऐसा नहीं कि टॉड बॉली के पास प्लान नहीं है. अब वो डिबेटेबल है वेदर यू वुड रेस्पेक्ट हिम और नॉट, बिकॉज अगेन गैरी नेवेल ऑफ द लाइक्स, काफी सारे सेलिब्रिटीज है जो दे आर काइंड ऑफ एज एन मॉकिंग एट टॉड बॉली एंड चेल्सी इनडायरेक्टली. लेकिन अब देखते हैं. अब देखिए, he clearly said that basically जब विजन की बात आती है, Chelsea and Thomas Tuchel had different vision, simple as that. और वो देख रहे थे someone who can collaborate with him. That is what the primary kind of ask was from that manager, जो भी यार Todd Boehly and co, Eghbali and वो सब दोनों साथ में सोच रहे थे. It was not about soccer. और मैंने सुना है, for those of you who might have missed the interview, man, it's not about soccer as he calls it, but definitely it is not also about that one result. It is clearly about a goal that you have together to work together. So clearly it was a mismatch. by chemistry बैठी नहीं दोनों की, simple as that. So pretty much sure that it's nothing to do with football, nothing to do with basically tactics. जो 4-4-3 वो सब आए थे, वो सब कुछ नहीं है. It's all about basically एक विजन, जो कोलैबोरेटिव अप्रोच चाह रहे थे, मोर इन्वॉल्वमेंट चाह रहे थे फ्रॉम द कोच, व्हिच वाज नॉट कमिंग प्रोबेबली, और वही वो चाह रहे हैं फ्रॉम ग्रैम पॉटर. ठीक है, बिग अप टू समर्थ. बिग अप भाई, कैसे हो? मेंबर ऑफ ऑलमाइटी ब्लूज एफसी. अगेन नजीब, I hope the set pieces would be better under Potter. Again, मैं यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है नजीब का. अरित्र बिग अप भाई, हम बारसा के बारे में बात करने वाले हैं. मानव भी बिग अप, कैसे हो मानव? ऑलवेज गुड टू सी यू ब्रो. तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आया है, एंड दिस इज अगेन दिस इज व्हाट द रिपोर्ट्स आर, और मेरे ख्याल से कंफर्म भी किया है एक वीडियो से चेल्सी ने. तो अगेन मैं यहाँ पर एक शेयर करूंगा वापस से, और आप लोग बोलिए if you know anything about them. Of course we can share about them, but this is what
their team is. अब again it is very very important what is the role of every coach, और looks like एक proper team आ रही है which is going to support Graham Potter. अब they are specialists in what they do. Anthony Barry, everyone knows, okay, he's already been there, right? Lekin again, he spoke about, I think, Bjorn Hamburg. Now, he is a very respected, one among them, I believe so. And so is Kyle McCauley. अब ये दोनों जो है प्लस बेन रॉबर्ट्स, तो अब ये बहुत ही स्पेसिफिक्स लाते हैं. अब होपफुली ये हेल्प करे इन टर्म्स ऑफ कोचिंग. ऑफ कोर्स मैं फिर से बोलूंगा, पीपल डोंट एक्सपेक्ट एक रात में चेंज हो जाएगा चीजें. It will take time, but looks like this is the team that is ready from Potter and Co. लेकिन हाँ, क्या केडीबी गोल मारेगा? अगेन इस पर स्टार कर रहा हूँ. कमिंग टू सिटी गेम हम बात करेंगे, एब्सोल्युटली करेंगे. मिस्टर फिनोमिनल, नाइस टू सी यू ऑलवेज. अगेन लाइक कर दीजिए सब लोग. जॉर्जी इज ऑलवेज गुड इन कोवा और कॉन्टेस्ट विद हिम. एग्जैक्टली दैट्स द ओनली रीजन मैंने डाला है साथ में. One thing is Todd isn't afraid to spend money. That's good. Well, start to सेंट्रल मिड में जकारिया और माउंट शायद मेरे हिसाब से. चलो जकारिया अगर करे तो आई वोंट बी अनहैप्पी एट ऑल, क्योंकि जकारिया को स्टार्ट करना मतलब भाई बंदे में दम है. सिंपल एज दैट. Anthony Barry, set piece coach, bilkul, he's always there. And again, the fact that we have specialists coming on along with him hopefully will help. I think Chelsea should play 4-3-3. ये विराज में बोलते आ रहा हूँ, we should play. लेकिन वो ये are we ready to play that in game 1 of Potter? I doubt it. Let's see. अगर खेले तो I don't have any issues with that. Potter be like Trossard to Pulisic, what a downgrade. By first of all, I hope Pulisic does not play exact Trossard role जो recent games में हुआ था, because Trossard was playing also wing back. Remember that. No early team news. Potter has changed the team up after previously training with a lineup yesterday. For example, Ruben started in training team but does not tonight. Nathan Gissing bol rahe. Interesting. CFC Blues. Again, thanks a lot for sharing that, bhai. Chelsea will win today by big margin. The reason being coach buff. Okay, that works more or less. Hopefully, it works for Chelsea as well. 4-4-3 is greater than 4-3-3. Really looking forward to Macaulay and his recruitment. Bilkul. I think boy, long term, it will come slowly but steadily. Lineup is going to come in 5 minutes. Just give me some time. Thanks for coming on. और यहाँ पे I think CFC Blues is okay. Let me see. Let me just refresh. You just share it. Let me bring it on screen as well. And yes, it is basically again. Yes, lineups आ गए यार. Lineups आ गए हैं. People, it has come. The lineups are here very much so. Okay, interesting that. So looks like okay. Looks like. Not a huge surprise, or is it? Okay, let me share it with you. तब आप लोग बोलिएगा क्या लग रहा है. Again ये UEFA वेबसाइट देख रहा हूँ मैं. Again I don't think formation आया है, but anyway let me actually put the website itself. और हाँ, meanwhile हम आएंगे बोली और बार्सिलोना and other things जो कल का हुआ था. But yeah, this is what it is. भाई देखिए, Jorginho starts. Thiago Silva, Kovacic, Aubameyang, Sterling, Mount, James, Azpilicueta, Havertz, Cucurella. तो अगेन आप देख सकते हो, कुकरेया वी एक्सपेक्टेड इट. जेम्स ऑब्वियसली इज द चेल्सी मैन अभी के लिए, लेकिन देयर आर अदर्स एज वेल. आई थिंक ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगेन आप लोग बोले क्या लग रहा है. आई थिंक फॉर मी इट इज लुकिंग लाइक वी आर प्लेइंग द ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मेशन. ठीक है, ट्राइड एंड टेस्टेड 3-4-3 लग रहा है मुझे, विद थियागो सिल्वा and with Azpilicueta, which is very very surprising for me. The only surprise is Azpilicueta, लेकिन वही है कैप्टन. और मैंने एक पोल डाला था आज, maybe the fact that वही है, he wants the captain to start his first game, especially being a Champions League game against Salzburg. I believe he thinks कि यार वो कर सकते जॉब against Salzburg. के पास है हाई प्रेसिंग, हाई इंटेंसिटी और पेस भी, तो थोड़ा सा सरप्राइजिंग है मेरे लिए. लेकिन हाँ, looks like Azpilicueta will play the right center back role. And wow, फोफाना किधर है भाई? Well, it's actually 4. Let me see, आप लोग क्या बोल रहे हो? Big up, कैसे हो भाई? Who's the wing back? Again, I'm trying to pull it up from other websites. Center back कौन है? अच्छा, looks like oh my god, what has this happened? Is it for real? हाँ, exactly. Center back कौन है? Azpilicueta is playing center back. Is it for real? Azpilicueta is playing center back, people, in a back 4. Looks like. अभी यार in 2 minutes it has literally struck to me भाई, again correct lineup. I hope it's on UEFA website by the way. सेंटर बैक कौन है? Havertz. अरे भाई बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग है ये तो. मुझे तो बहुत सरप्राइजिंग लग रहा है ऑन योर राइट हैंड साइड. अगेन इसके बारे में हम बात करेंगे. DCI मैं स्टार करके रखा हूं. आई हैव प्लान्स ऑफ टॉकिंग अबाउट दैट. लेकिन प्रीटी श्योर. अच्छा, सब्स्टिट्यूट देख रहे हैं
भाई सब्स्टिट्यूट में चालोबा है लेकिन ही डजंट स्टार्ट, फोफाना भी है, ये हो क्या रहा है, कुलीबाली भी है, what the hell is happening? Is it for real? Come on, man. Surely UEFA has made a mistake. Let me just refresh it. I can't believe it. सब लोग, can you believe that lineup? I cannot believe it. The fact is, looks like हम जा रहे हैं for the back. Again, मैं stop करो. Let me see what are other websites saying. Pretty sure this is not what the plan was. Again, I am kind of spellbound अभी सच में बोलूँ तो. लेकिन again, let me check other website. Give me a second, people. By the way, meanwhile, like कर दीजिए stream को. और of course, we will be discussing about hopefully every game if time permits. Okay. So again, I think it was the wrong lineup, people. It's real. 4-3-3. It's real. Man, I'm looking at the other websites, man. Other websites are talking something else. I don't think उन्होंने update किया अभी तक. बहुत ही इंटरेस्टिंग है. मतलब अगेन मे बी इट इज जस्ट अ सरप्राइज एलिमेंट और द फैक्ट दैट हो सकता है थोड़ा निगल्स हो. दैट लेट अस वेट. अगर आप लोग सुन रहे हो भाई प्री मैच का इंटरव्यू, प्लीज बता देना मुझे. लेकिन हो सकता है थोड़ा सा निगल हो. आई डोंट नो. दैट्स व्हाट आई कैन थिंक अबाउट टू बेसिकली फफाना एंड कुलीबाली, which is very very surprising for me. लेकिन अगेन हाउ कैन वी go with that, man? अगेन यहाँ पे आई थिंक आपने डाला था लाइनअप. let me just come again and yeah, this is what it seems like. So again, James Aspilicueta, Silva. So I don't know whether they are playing one as a left center back. ये हो सकता है if they are going in the back five. But again, back five नहीं लग रहा because उसमें wing back, second wing back कौन होगा अगर जेम्स और Aspilicueta दोनों ही सेंटर हाफ खेले तो. इसलिए मुझे लग रहा है बैक फोर ही है with Aspilicueta and Silva as center backs and James as right back, Kukurea as left back. And you have Jorginho as your single pivot, and maybe Kovacic and Mount either side, number 8s, and Havertz, Aubameyang and Sterling as your front three. Oh my God, is it for real, man? Abhi tak I'm not able to understand. Okay, ये मैच must win होना चाहिए and Potter must give a statement by strong win. Absolute, yeah, बिल्कुल. मैं वही वापस से I'm just reconfirming this, people, क्योंकि यार it is almost like Tuchel, if Tuchel shocked. भाई Tuchel का लाइनअप कोई भी गेस करता ना, that was a big deal. Trust me on that. It used to be a big deal. लेकिन आज के दिन में who knows, right? if Potter is going to surprise us even more, who knows that, but that is like crazy, man. Absolute crazy. Again, काफी surprising है, in my opinion, but again it is what it is. A lot of times which happens, right? Okay, no problem. I think I called Mikhail, but Mikhail is not able to come, but again others will join in some time. So again सब लोग देख रहे हैं हम. अरे भाई Havertz, yeah, again let me check the comments यहाँ पे quickly. समझ बोले भैया ई फुटबॉल मोबाइल खेलना स्टार्ट कर दो, ऐसे सब इंटरेक्ट कर पाएंगे क्योंकि उस PC nahi chahiye. Anybody can play and will be a fun way to interact. Okay, fair enough. Let me see. Samad, let me start that as well for my future. Thanks. Seems like Potter called Pep before the lineup selection. Oh my God. Again नहीं, शायद 3-4-2-1 कैसे होगा भाई? अपना 4 दोनों विंग बैक कौन होंगे तब? Let the real exactly. Let me actually see. Let me actually see the update on Twitter. That is the Chelsea account. I really want to see भाई ये हो क्या रहा है भाई, ये हो क्या रहा है आफ्टर ऑल. अगेन प्रोबेबल लाइनअप आ गई है, बाकी सब लोग प्रोबेबल लाइनअप का अलग था लेकिन मेरा अलग है. लेकिन अगेन टिल द चेल्सी वेबसाइट सॉरी ट्विटर अकाउंट आल्सो अपडेट्स, लेट मी एक्चुअली डिस्कस अबाउट अ कपल ऑफ अदर थिंग्स जो मैं प्लान करा था ऑलरेडी. ठीक है, एंड यस, लेट्स गेट टू 150 लाइक्स पीपल. लेट्स एक्चुअली गेट देयर एब्सोल्युटली. तो भाई मैं कोई चीज शेयर करने वाला था. यस, अब we just share about the team of Potter जो है, and of course जो Boehly ने बोला about Tuchel and all that, right? But I think again the big news has been made, and this is the big news. और I think काफी लोग ने comments में बोला था. Again, भाई I have to say yes, काफी Chelsea fans, fellow Chelsea fans are defending Todd Boehly यहाँ. I won't defend him. मैं नहीं डिफेंड करने वाला. भाई तू एक क्लब ले रहा है और तुझे यही नहीं पता है कि भाई आपका केविन डी ब्रुयना एंड मो सलाह आर नॉट अकेडमी ग्रेजुएट्स. इज इट फॉर रियल? Is it for real, man? I don't buy that at all. Please. For me, I know that Roman Abramovich would have checked who's getting Chelsea Football Club, but the fact is he doesn't know in and out of Chelsea. Sorry about that, bro. Sorry. Yes, he might be qualified and he'll be great, and of course I'll give him a chance. मैं दूंगा, मुझे कोई option है नहीं. लेकिन the fact is, if you are owning a club which I personally love from 23 years, okay, and you don't know even 10% of what I know, I'm sorry, boss. I'm sorry. I'm just sorry.
I'm really sorry about it. I don't respect this guy very honestly. ठीक है, yes of course he has big plans, और वहां पर हमने शेयर किया था. तो couple of big plans जो था about Chelsea Football Club is about, again we'll come back to the matches as well, लेकिन ये अच्छा है प्लान है, दैट अबाउट ट्राइंग टू बेसिकली ओपन अप एक चेल्सी बी रादर हैव सम फीडर क्लब्स, एंड पोर्चुगल और बेल्जियम का नाम लिया बहुत इंटरेस्टिंगली, एंड दैट इन माय ओपिनियन इज ग्रेट बिकॉज अ लॉट ऑफ बेल्जियन grassroots football has been improved over the last few years as well as Portuguese football से तो stars आ ही रहे, तो वहां पर I actually agree with him for a change. ठीक है, तो I won't disagree with him totally, लेकिन in terms of respect man, I'm sorry bro, I'm sorry, I heard the entire interview, मैंने सोचा यार it is for not real, वो fake है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पहले दो नाम लिया यार, चलो गलती से बीच में लिया फिर भी समझ आता, पहले दो नाम उसने लिया क्लियरली about Mo Salah and KDB, which is absolutely not acceptable to me. It's not that he even realized. Yes, AC Milan का गोल हो गया meanwhile. प्रेम शाह बिल्कुल यार, and it was kind of expected, but again यहाँ पर the second goal was what, सालेमेकर से क्या वापस, अरे भाई वापस सालेमेकर से यार, thanks. Todd Boehly being evil character, I don't know man, मतलब but he's 100% better than Kroenke. Again अभी तक 100% बोल नहीं सकते यार डेरेन, मैं तो यही बोलूंगा he should have some information man, absolutely, मतलब it's crazy man, he's not trustworthy. Again it's purely business for him, and it's clear for me he's not a fan, trust me on that. Mo Salah and KDB after seeing this, ये कब हुआ? Ankit from Almighty Blues to replace Boehly as the owner of Chelsea FC. I wish man. पैसे दे दो, फंड दे दो बस, और कुछ नहीं. Defense will get bodied by striker. Again हम आएंगे उस पर. Gaurav absolutely. Milan goal, yes. It's a back three of Cucurella. Okay, Cucurella, Aspi and Silva. हाँ, that might be the thing. लेकिन यार the wing backs कौन होंगे? Left wing back कौन है? I don't think so, Najib either. बहुत ही interesting होने वाला. Trust me, I think it's a back four. I genuinely believe it's a back four. Aspi playing in the back four. Maybe वो सोच रहे कि Aspi no longer having that change of pace, इसलिए वो right center back नहीं खेल रहे या right back नहीं खेल रहे. Maybe I'm just thinking. लेकिन over Koulibaly and Fofana, where we have spent like 110 million put together. Very strange that. Anyway, Portugal and Netherlands have been producing stars for the last 10 years now. It would be a good initiative to build feeder clubs there. Yeah, absolutely. Sterling is a Trossard role. Again, I hope not. I hope that he actually is in the forward line. But anyway, no one can understand that. That's why मैं wait कर रहा हूँ official lineup आने की, even on the Twitter account as well as other websites, कि वो लोग क्या बोल रहे हैं. Again आ गया है. Let me actually come back to the topic that I was trying to discuss about Todd Boehly. लेकिन भाई official Twitter account भी confirm कर दिया है. Looks like it. So this is what the official Twitter account is. Yes, it is for real people. On the bench, and listen to this. On the bench is Koulibaly, Chalobah, and Fofana. ये सच है, आप मतलब ये कोई रिग नहीं किया भाई अकाउंट, ये सच में है, आप लोग देख रहे हो. एंड ऑन द बेंच फॉर वॉट एवर रीजन, आई डोंट नो वेदर ही वांट्स टू बेसिकली वाओ द सपोर्टर्स और व्हाट, भाई क्या करना चाह रहे हैं, या इंजरीज है, आई डोंट नो. लेकिन लुक्स लाइक जेम्स, एस्पिलिक्वेटा, थियागो सिल्वा, कुकुरेया जो है, दीज आर योर बैक फोर. ठीक है, माउंट, कोवाचिच और जोर्जिनियो मेक्स अ मिडफील्ड थ्री, एंड स्टर्लिंग, ओबामिंग, हैवर्ट्स मेक योर फॉरवर्ड थ्री. इसलिए मैं तो बोला भाई 4-3-3 ही लग रहा है. अगेन मैं चेक करने वाला हूँ व्हाट आर एक्चुअली द लाइनअप्स. यस, और काफी सारे वेबसाइट्स literally they are like very surprised right now, and they're showing like everything. But anyway, it's a 3-5-2. let's see lineup क्या है, मैंने दिखा दिया. अली गेमिंग बिग अप. अगेन लाइक कर दीजिए, भूलना मत. Sterling playing Trossard maybe. Again देखते हैं, let's see. Back four will be good, I think. Silva back is paining already. Oh my god. I think Chelsea को बोनसेस देके किसी तरह रोक लेना चाहिए. ओके, कांटे लेवल, हाँ मतलब बाय द वे ये भी एक पॉइंट है डेफिनेटली मुझे डिस्कस करना था. बट एंगोलो कांटे यार, मतलब इज इट वर्थ गिविंग हिम अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट? लेट मी नो इन द चैट. एंड वहां पे भाई आई हैव अ सुपर स्टिकर फ्रॉम राहुल. भाई राहुल बिग अप, थैंक्स फॉर द जेस्चर, ऑलवेज हेल्प्स. अगेन जो भी आएगा इवेंचुअली टू ऑलमाइटी ब्लूज एफसी, गो बैक टू द चैनल टू अपग्रेड, जैसे हम हमेशा चाहते हैं. Would you like to be owner of Chelsea FC or being a coach there? Well, player, coach, manager, owner. How about that? Brilliant, right? All 4 in 1. लेकिन brilliant रहेगा. Boehly also said about academic players should be valued more as we are not utilize them much in transfer market. भाई हाँ, ये एक चीज है कि यार in terms of basically एक transition,
उन्होंने ये जनरली बोला दैट फॉर एग्जांपल हम जब स्काउटिंग करते हैं तो देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट यू गेट इन ब्रिटेन, राइट, एंड दैट इज बेसिकली इमिग्रेशन. To be it in women's football or in men's football, he wanted to basically scout better in terms of data so that हमारे पास जो अभी data नहीं share होता है between the academy and the first team, it's a problem. वहां पर we'll know exactly from which areas of the world are basically people coming जो अपने national teams के लिए खेले हैं, जो basically can get you those points so that easily immediate हो जाए and they are good players. So there is a good bit of scouting strategy in that. मैं ये भी बोलूंगा absolutely. Yes, it's a back four, looks like a 4-3-3. मुझे भी Sterling left wing back. I hope not. वही स्टर्लिंग ट्रोसार्ड रोल जो बोल रहे थे, I hope not that's the case. लेकिन अभी time will tell. Havertz to definitely not right winger यार. Come on, that's a wrong strategy अगर वो होता है तो. Todd Boehly is here for sure, surely for business, पर पैसा लग रहा है तो थोड़ा knowledge भी लगाओ. बिल्कुल यार, मतलब वो disappointed यार. तो इतना तो मतलब आप करोगे, मतलब he'll have maybe 5 assistants to tell. I'm pretty sure. नहीं, मेरा माउंट तुक्का लग गया. Let's see what is the lineup. I can't understand. 3-5-2 यार, अगेन जो लोग बोल रहे 3-5-2, डू यू एक्सपेक्ट स्टर्लिंग टू प्ले दैट विंग बैक? आई डोंट. लेट्स सी, इट विल वर्क. Let's see. If Potter plays this defense in Premier League, he has to be sacked. This can't work. I think there's something more there. मतलब maybe I'll give him a chance. सब लोग जो सुनेंगे भाई प्री मैच इंटरव्यू बोल देना भाई प्रीटी श्योर कुछ निकल से कुछ है. लेकिन अगेन 3 पीपल यार, चालोबा एक सेंटर बैक है. रिमेंबर ही इज आल्सो प्रॉपर सेंटर बैक. एंड हाँ, हम लोग टूकल को क्रिटिसाइज किए थे, ही डजंट प्ले चालोबा मच, लेकिन चालोबा एक सेंटर बैक है. देन ऑफ कोर्स वी हैव कुलिबाली एंड फफाना, जिसके लिए हम इतने पैसे खर्च किए भाई. आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस, स्पेशली फफाना. इस 11 में डिफेंडर कौन है? आई थिंक इट्स अबाउट एस्पी गेटिंग रीइन्वेंटेड. लुक्स लाइक, आप देखना, एस्पी इज बीइंग ट्राइड एज अ सेंटर बैक इन यूरोप. अब देखते हैं क्या चलता है कि नहीं चलता है. और यहाँ पर अगेन आई विल ट्राई एंड सी यू नो व्हाट बेसिकली अदर लाइनअप्स आर, अदर वेबसाइट्स आर सेइंग. बट हाँ, आई वाज राइट, लुक्स लाइक आई वाज राइट पीपल. हाँ, थोड़ा सा वेबसाइट ने किया है वो थोड़ा सा गलत किया है, लेकिन अगेन दिस इज द अपडेटेड फॉर्मेशन जो बेसिकली हम जो फॉलो करते हैं भाई, दे हैव अपडेटेड एज वेल फॉर अस. देखिए अगेन मे बी 4-3-1-2 हम फेस कर रहे हैं, इसलिए मे बी मैन फॉर मैन जाने के लिए सोच रहे थे. लेकिन वैसे भी व्हाई वुड यू एक्चुअली गो विद एस्पिलिक्विटा? हाँ, द ओनली मेरे को लॉजिक क्या लग रहा है ना, एवरीवन इन द चैट आप लोग भी बोलिए, मेरा लॉजिक क्या लग रहा है कंपेयर टू बेसिकली अ फफाना एंड कुलिबाली, एस्पिलिक्विटा नोज द मूवमेंट ऑफ आवर फॉरवर्ड प्लेयर्स अभी के लिए ज्यादा. तो मे बी फॉरवर्ड पासेस इज समथिंग दैट इज सीइंग लेस एंड दैट इज व्हाई ही इज हैविंग एस्पिलिक्विटा. वो ओनली लॉजिक है मेरे लिए, और कोई लॉजिक नहीं है. और कैप्टन है तो भाई पहला गेम शुरू करेंगे एंड प्रोबब्ली he wants to reinvent Aspilicueta because he doesn't see him as a right back or a right center back in a back three. तो ये हो सकता है, ठीक है. लेकिन अगेन यहाँ पे एक चीज गलत है, जॉर्जिनो डेफिनेटली सिंगल पिवट खेलेंगे बीच में एंड इट विल बी नंबर 8 कोवाचिच एंड माउंट एंड और इट कुड बी कोवाचिच जॉर्जिनो का यू नो डबल पेयरिंग एंड मे बी माउंट इन फ्रंट. तो काइंड ऑफ मैचिंग एग्जैक्टली सॉल्जबर्ग का फॉर्मेशन वो भी हो सकता है. It's quite formation. और यहाँ पर maybe you can have Havertz in between and you can have both. जैसे हम खेलते हैं, I think if I'm not wrong, हम discuss किए थे, Potter has actually played that with you know Brighton as well, not just basically you know 3-5-2. He has also played for at the back. Remember हमने share किया था how he uses that you know as in a position of a Trossard or maybe a McAllister. वहाँ पर he kind of may use Havertz or Sterling in my opinion. आप लोग बोलिए, लेकिन again bench has been confirmed. Armando Broja, look at the bench by Christian Pulisic, Conor Gallagher, Zakaria, Ziyech, Loftus-Cheek, Koulibaly, Chalobah, Fofana. Oh my God. But talking about Salzburg, Sesko is on the bench. Interestingly, he's not starting. लेकिन हाँ, again he's not been starting off late. Their main guy is Okafor. तो ये बहुत ही डेंजरस प्लेयर है. आई थिंक अपार्ट फ्रॉम दैट वी शुड बी फाइन, लेकिन इट्स मोर अबाउट द टीम वर्क जो करते हैं. आप लोग बोलिए व्हाट यू ऑल हैव टू ऐड. मीनवाइल एक जागरेब का गोल हो गया भाई, ऑर्सिच स्कोरिंग अगेन. तन्ने बोले 2-2-2-2-2-2. Oh my God, has to play it back seriously. Well, a centre back, I don't know what to say. नहीं, I hope not. I hope not. याद करिए भाई, he is our only attacking outlet in form, really speaking, right? Apart from Sterling. भाई बढ़िया गोल यार जागरेब का, बहुत ही बढ़िया गोल था. अगेन आई थिंक व्हाट इज अगेन पेटकोविच एंड ऑर्जिच यार, यही दोनों हैं. वापस से दे कंबाइंड एज वी गेस्ड, एज वी आर प्रेडिक्टेड भाई. 2-1 हो गया मिलान जागरेब अभी. Yes, give Kante 3 or contract, sell him. Let's see. Fofana starting. Why? Again, time will tell. यहाँ पर सिटी की लाइनअप भी आ गई है, looks like.
Mahrez, Grealish, Akanji start over Bernardo, Foden, Diaz. I hope Pep isn't overthinking and underestimating Dortmund. Well, again, हो सकता है, देखिए, मतलब I can understand why Akanji starting, that I can understand मानव, लेकिन again ग्रिलिश और मारेज को इतना टाइम नहीं मिला है, तो I think he wants them to be sharp. But again, it's going to be a international break, so again I am with you on that, so I can understand. Exactly भाई, मतलब this is the thing that मैं बोल बोल के थक गया हूँ, but again it is what it is. Okay, इस लेवल में डिफेंडर कौन है? एसपी लग रहा है. कुलीबाली, फफाना दोनों यार, इमेजिन. फफाना का एक चीज है कि मे बी वो रेडी नहीं होंगे इन टर्म्स ऑफ गेम मैच फिटनेस, तो दैट माइट बी वन ऑफ द रीजंस. मैं इतना बहुत बता सकता हूँ. अगर 4-3-3 में राइट विंग लेफ्ट विंग हो तो जियेश को रखना था इंस्टेड ऑफ हैवर्ट्स. वही बहुत लोग बोल रहे हैं. आई एग्री देयर. अगेन पीपल, लेट्स गेट द लाइक्स अप. और आप बोलिए यार, मतलब एसपी इज अ वीक लिंक, लोन वुल्फ बोल रहे हैं. जॉर्जिनियो इज आल्सो अ वीक लिंक पोटेंशियली. Hey Justwaila, how are you? Always good to see Chelsea fans here. Again, don't forget to like and subscribe. अगर आप लोग ने नहीं किया सब लोग. Jorginho instead of Zakaria could have been interesting. Maybe he didn't want to change it so much. एक शॉक बस है कि एसपी है और नो फफाना. यार मैं पहले ग्लांस में मुझे लगा कि इतना सरप्राइज नहीं है, लेकिन फेमिलियर नेम्स थे. लेकिन देन फॉर्मेशन देखा तो भाई एवरीथिंग इज डिफरेंट एज वेल. यस, Zagreb with a beautiful goal. Koulibaly should have started. He finally get a back four, but with Aspi, the bench is clear of Salzburg starting 11. Exactly, man. मतलब he should use more. नहीं बहुत जल्दी है, but I hear you. Anyway, so people, we'll come back to the tactics and whatnot, right? And of course, meanwhile, I can also take a look at other games quickly. हाँ, टॉकिंग अबाउट अदर गेम्स, भाई कल का गेम में थोड़ा सा बात तो करना बनता है. I know that Barca fans have been waiting as well in the chat and as well as Bayern fans. तो भाई कल का गेम क्या, any after thoughts? क्या what went wrong? Again, a lot of things आप बोल सकते हो. I know that थोड़ा सा डिग, I don't know ये फेक था कि नहीं. मुझे याद है कि कुंडे का एक अकाउंट था जो बेसिकली ट्रोल किया था. इट्स अबाउट and this is where I almost went. अब तियागो सिल्वा ने भी फेक किया. I don't know why. Whether it was troll or whether it was a fake account, I don't know. Is it for real? मैं दिखाऊंगा. Again, people don't troll me or Thiago Silva. ये मैंने देखा तो मैं डाल रहा हूँ. Again, I think it's probably fake. लेकिन again, I remember Kunde had basically, this was after the second goal जहां पर साने ने मारा ना गोल. तो I think after the second goal has happened. लेकिन what do you think about that? Any comments on this by Thiago Silva? अगर सच है तो I think it's mostly fake. लेकिन I'm just kind of wondering, if it's for real, then wow man, this is like guts, absolute guts है. And I think कुंडे का भी एक अकाउंट था जो कुछ तो डाला था. I remember that, but similarly that I almost went to London, something like that. तो maybe उसका जवाब था. I don't know, I can say that. Okay, so we have Akash in the house. Akash, hello bro, long time no see. How are you? Hey bro, I'm good. How are you? Great to see you finally. And yes, people, by chance आपको पता नहीं भाई, Akash is also Chelsea ultra and he knows his stuff. And you can find Akash's social media handle down in the description. So Akash, crazy lineup. We were quickly discussing what happened yesterday. Meanwhile, but coming back to the Chelsea game, I don't know if you have taken a look. It seems like a back four with Aspi as a center back, bro. I just got back from work and same thing. I was just looking at the lineup and trying to make sense of it. So I can't think of too many occasions where Potter has played a back four, at least this season. I think he played it for a little while in the Fulham match and they lost as well. And SP at center back, like you said, pata nahi bro. Doesn't make much sense to me. I think it could be some variation of a back three with Cucurella, Thiago Silva and SP, but again, देख सकते हैं. Doesn't make much sense अभी देख के. या मतलब वही है, मतलब तीन जन का भी एक साथ में इंजरी नहीं होगा ना. इट्स काइंड ऑफ वेरी सरप्राइजिंग बिकॉज फोफाना, कुलिबाली एंड चालोबा all are actually on the bench. It's not like they've been not named or injured or something like that, right? So pretty sure it's like reinventing Aspi or just playing his captain for the first game. Maybe the fact that he knows his players better, he's like, okay, forward pass ho nahi rahe, so let's play Aspi in this game and let's see. I So don't know. one again, I'd caveat this. So Brighton की system में, I think the wing backs rotate a lot, right? So it's Gross and Solly March who often played right wing back, but उनके बीच में वो पूरा होता रहता है कि one guy will drift inside, one guy might stay wide. तो
I'm not too sure what this will look like, but again, so first 10 minutes में पता चलेगा for sure. But this Especially looks like crazy. people are saying हो सकता है कि Sterling plays the Trossard role of recent time जहाँ पर Sterling might become the Pulisic of Tuchel, which I hope not, which I really hope not. Yep. लेकिन that might be one of the things. You're right. मतलब in game in possession basically there are times go three at the back when they start with four at the back with the wing backs kind of one playing the attack role and one not, right? So that happens a lot. But again, time will tell. Like you said, we'll wait for that lineup. इसलिए मैं lineup के बारे में इतना डिस्कस नहीं कर रहा था अभी. I was just waiting. And yes, by the way, meanwhile, there are a lot of fans of other clubs as well in the chat. So I was just showing. I don't know if you noticed that Thiago Silva. I think it's probably fake. That Kunde recently said about I was about to come to London, and then Thiago Silva responded yesterday. I think it was probably fake. But Yep. True. apart from that, also I think there was more trolling. I know that a lot of trolling happened generally yesterday after Bayern Barca, but this is for real that I did see. I don't know if you saw, but just quick thing. Bayern Barca, man, what was your take, man? Barca just missing chances like us? Why? So first half, I think Lewandowski got in so many times, right? And someone like Lewandowski, I think people analyze him in different ways. कोई एक बोलता है he's the most clinical striker in the world, but another guy will come and point to his big chance, miss numbers, especially Bundesliga में अगर इतना chance miss कर रहा है, then if he comes to some place like Chelsea, obviously he's going to miss a lot more. I think yesterday was more on the negative side for Lewandowski. He got in first half, में, I think he had like two clear-cut opportunities to finish and he missed. Plus, Bayern just turned it around second half. First half, they didn't have. There was no semblance of any attacking identity. कुछ था ही नहीं. Barca, Pedri and Gavi were barging into Sabitzer's back, winning balls for fun. Second half, में there was this huge change. And Sane as well. He scored that second goal. But I think उसने भी बोला मैच के बाद कि he was definitely not happy with the performance. It wasn't a vintage मतलब Sane performance. He didn't look too confident on the ball. Didn't look comfortable beating his man. But मतलब he made the contributions that mattered. And Upamecano again, he's a player I've rated for a long time. Crazy player. Kalbi, I think it was one of his best. Yeah, One he's of the coming back to the player we saw 2 years ago, right? As in, he was like one of those sought after people. और finally लग रहा है भाई यार वो कर सकता है. Not just his passes, but even actually as a partnership with Lucas Hernandez, he was actually looking the real deal. I have to say that 100%. Like, and very very strangely, I know a lot of us kind of troll the Farmers League and whatnot. भाई कल craziness happened. I think three German clubs, all three got a win. And that's something that again मैं तो बोलते रहता हूँ अपने चैनल में भाई the reason why you should follow other leagues as well. You never know. The next big star is going to come out of Germany or beat Serie A जो चल रहा है अभी मिलान का मैच भी. But absolutely great for German football. But for you, as in generally, I know that Todd Boehly has spoken a lot in the last 24 hours. And I don't know if you got a chance to read through or see his Yep, yep, video. yeah. I actually saw the video just before coming on again, right? Again, and like, am I actually listening to what I'm actually listening? Yeah, few things I definitely agree that what his plans are really really good. But where are you? Like like at this point in time, honestly, I know हमने बात नहीं की है Akash like about the Tuchel thing and everything, the way it was done. I understand that two people don't get along and they have different visions, etc. But like doing it like in a moment, considering what Tuchel had done for the club and his reasoning about Potter, I don't know from where he got so much information about Potter all of a sudden. But where are you on the entire strategy? Like, do you feel he's like one of those proper businessmen who just come for that, which what it seems like at the outside, or you think no, he has a channel plan. It was already always in the plan. It was just about him waiting for the moment. So the first thing I did as soon as I heard about the Tuchel sack was deactivate Twitter. मतलब जाना ही नहीं था, सुनना ही नहीं था what people were saying. It's like there is only hyperbole, right? कुछ एक rational point of view बनाने के लिए you have to disconnect and then maybe think of things on your own. I was very upset that Tuchel was sacked. He led us through a very difficult time. And वो Champions League आप सोचोगे तो I think the entire world was so depressed over COVID and he gave us something to be happy about. But uh, I've read a lot. मतलब Simon Phillips has been doing a great job of reporting stuff post the sacking. And यही बोल रहा है कि there's a guy who's willing to back you with so much money, basically give you a free reign into transfers. Say कि this is the structure I wanted the club, but Tuchel maybe didn't think of things the same way, which is at least what I've read. तो उस हिसाब से Mhm. Todd Boehly didn't feel comfortable pumping so much money into the club. And from a businessman's point of view, maybe I understand, but for the emotional side, I'm really, I'm definitely very upset about Tuchel. But अभी कर भी क्या सकते हैं? You can only hold on to stuff for so long. So I'm just looking Yeah, forward as to in the future. obviously. But I'm just hoping that this knee-jerk reaction do not continue. That's all I'm hoping for. Again, matlab, um,
I did show everyone in the chat by the statement he made, of course, when he started off about our academy being the best in the academy. We have got Kevin De Bruyne, Mo Salah, and whatnot. Come on, man. Come on. He should at least know that. Like, one person that is obvious that he probably should have taken the name was this man. This guy is actually one of them. Again, we let him go from the academy quite early, I remember, Musiala, but he's been rocking Europe. Like, for someone who's coming as I know that he's coming from the US. I don't expect him to be like the absolute football pandit, and he doesn't claim to be. I know that is Todd Boehly I'm talking about. लेकिन भाई आप किसी क्लब को ले रहे हो, इतना इन्वेस्ट कर रहे हो, you at least should be knowing about like current affairs, what is going on in football and stuff like that. Like, obvious the names are like which come to mind is, okay, like our academy, like you have Mason Mount, Reece James, Tammy, Tomori, etc. But obviously Musiala, Rice, etc. were also part of it. So it's so surprising for him to actually even say that. But again, on the other hand, there are reports saying that maybe that is the reason why, along with the big team that Potter has actually brought, he's looking for a director of football. In fact, he's looking for multiple directors of, I don't know, one for football, one a technical director, one I don't know what, pata nahi kiska director. Like, he's looking at various different roles. So looks like बहुत ही defined roles रखेगा, लेकिन collaborative approach of them meeting more often, etc. will go on. So where are you on that? This guy, like, I think one guy is Michael Edwards. We were trying Liverpool ka, but again, he, if I'm not wrong, he wanted a break. Simply put, when we tried to get him in the summer, then I think we have gone for Luis Campos. Again, Luis Campos is someone who's been with the PSG of late. लेकिन उसने literally build की थी when it comes to Monaco. If you remember Monaco, that team which kind of won things, and of course Lille. तो but at that point also आपको याद है, तो we were trying to get Campos, and उसने बोला था नहीं, there's a cultural difference, so I don't see I'm ready for that. And now looks like Christoph Freund, I don't know how do you pronounce his name, is basically the I think he's already praised the RB, the Red Bull group. So he's been part of Salzburg, part of great scouting as well. So do you think it's better to get someone, say, from Premier League, considering what Chelsea is going through? We don't have a, like, a footballing person really. Uh, so again, I think he's Todd Bowley, at least for me, is making all the right noises. He's saying, I don't know enough about football to effectively put that structure in place, but what I'll do is get people who do. And again, you're saying it, Ocampos, who basically scouted players like Bernardo Silva and multiple other signings at Monaco. He's brought in Renato Sanchez from Lille, who's gone on to kill it in the French league. And Red Bull system देखोगे, so they've signed players like Haaland, Minamino, who was a flop in the Premier League but still is a good player. Then you have Szoboszlai. So basically, there's a lot of put football people in charge of footballing decisions is all I've asked for at Chelsea, and Todd Bowley seems to want to do that. And you can basically, for me, what I'm trying to do right now is disconnect from my emotions regarding Tuchel and just say the noises he's making right now point to a guy with ambition. He's saying मुझे multi-club system चाहिए where the people who will cut it at the very top will play for my best team, but then there are pathways for everyone else coming through the academy. They'll play in maybe जैसे Salzburg में जाके लोग खेल रहे भी. So those pathways are there, which I think academically is going to be a huge motivation. So there's a lot of negativity, I'm sure, but पूरा disconnect करके all I'm मैं hoping एक for और is एक 2 और साल बोलने के वाला बाद. हूँ. Akash will probably relate to it. I don't know, like, by the way, Devin, I'm trying to be definitely, yeah, always excited for Chelsea. Let's put it that way. I don't think it's about one person. Always excited for Chelsea. No two ways. इसलिए मैं तो टाइम से जल्दी लाइव कर लिया भाई. आते हैं बात करते हैं. मतलब definitely there's lots to discuss. Again, thanks for coming on. Again, people, by do not forget to give Akash a follow. His social media account link is below. But also give a like to the stream. Absolutely helps. And again, we'll be discussing other clubs as well, jab time permits. But talking about the things which were spoken about again, the all-star game, bro. All-star game, yes, I know, like, that's a big thing again for someone who's actually lived there. I know that it's a huge thing, no two ways about it. Lekin it's more like, okay, it's just like a celebration kind of a thing. It's almost like that. Yes, they make a lot of money out of it, but again, already other clubs are getting a proper chance to troll us, man. I don't know where are you on that. बोलने दो भाई, होता है मतलब भाई, he's making suggestions to say these are things that work in the US. Maybe some elements of it might work here. There's no hard and fast rule that he might see. Klopp ko giving him the time of day on things like this. People like Klopp and Gary Neville will only have negative things to say about Chelsea, so it doesn't matter for me in the least. The guys is giving suggestions though.
होगा भी नहीं, मतलब which Premier League club is going to say okay we'll risk injuries, we'll send our players here, जाके मौज बना के आना 2 दिन बोल के. It's not going to happen. He's just making suggestions and saying US में ऐसा होता है, शायद हम कर सकते हैं. तो उतना ही, I'm not taking it at face value. The guy can say whatever he wants as long as he pumps money into Chelsea and puts structure in place to make us a winning club. I don't care what he says in press conferences. So this is what the geography looks like. People, भाई अपना टाइम अपना टीम बना लो अगर बाय चांस होता है फ्यूचर में. आई एम विद आकाश ऑन दैट. लाइक अगेन देयर आर मल्टीपल आइडियाज दैट ही हैज. सो पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ लुकिंग एट इट, लाइक वो आइडियाज दे रहा है काफी. Now it's up to basically others to kind of get to that or whether they agree. I know there's a cultural element जो हमें भूलना नहीं चाहिए. Meanwhile बीच में I know Rodrigo का फोटो दिखाया था भाई, वो भी दिखा रहा था कि भाई there was actual troll, not from me but from Rodrigo to Barca fans. No, don't misunderstand. But yeah, this is what the thing is, and I don't know, man. Do you have your north versus south ready? Everyone in the chat, आप लोग बोलिए. Again, Abhishek Bansal भाई please spam मत करिए. But always good to see you. अच्छा ऑलरेडी आ गए. टीम भी आ गया यार. यहाँ तो इंटरेस्टिंग. यहाँ पर आई थिंक ESPN ने लगाया एक टीम. अगेन बहुत ही सरप्राइजिंगली, whether they wanted to troll them or what, this is what they had. Let me try and share it. Akash, I want your expert comment भाई इसमें. Again, geography of England, I wasn't very sure, so I showed that map first. लेकिन not having a Virgil van Dijk, very interesting यार. बहुत ज्यादा ट्रोल हो गया तो नहीं. कोई लिवरपूल हेटर ने बनाया है, बट चलने देते हैं. मतलब आई एम आल्सो सेलिंग इन द सेम बोट. प्रॉपर ESPN में हुआ है, आई वाज वाचिंग इट लाइव. दिस एक्चुअली हाँ हैपेंड. आई भाई डोंट नो, देख दिस रहा जस्ट हूँ. मिस्ड इट. केविन डे पीपल, ब्रुयना एंड हालैंड, मतलब और कुछ बोलना ही नहीं है भाई. दे दो नॉर्थ वालों को. हाँ मतलब लॉट ऑफ ऑप्शंस देयर. अगेन चेल्सी में रिप्रेजेंटेटिव्स कौन है यार यहाँ साउथ में? रीस जेम्स है, कांटे. कांटे. हाँ, माउंट नहीं है क्या? माउंट नहीं है. माउंट नहीं है. फॉर्मेशन की वजह से मे बी आई एम गेसिंग. फॉर्म की वजह से भी हो सकता है. इज बीन प्रीटी बैड दिस सीजन. सो Yeah. And again, let's get to the likes, absolutely. But yes, I think let's get back to the game. I know बहुत इधर उधर की बातें हो गई. And yes, people will be discussing other games as well. Of course, there's Man City game and whatnot towards the end of the stream. लेकिन we'll add Shrey as well. Shrey, welcome bro. क्या हाल है? Thank you, Ankit, to have me on. Big up to Akash as well, and big up to the chat as well. Thank you, Ankit, to have me on. अरे always यार. Shrey, are you still thinking in Azpilicueta as centre back in the back four? Looks like, or are we getting the formation wrong? I think for me, Ankit is a back three, in my opinion. I think he's trying to do what he does at Brighton. I think he's going to play Mason Mount as a left midfielder, Reece James as the right midfielder, and I think Cucurella will slot in a left centre back. I think if it's back four and Aspi is playing as a centre back, that's going to be interesting, Ankit. Really interesting. बहुत ज़्यादा मतलब I'm worried if Aspi plays as centre back. इंटरेस्टिंग दैट. अगेन मैं एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा. आई थिंक इट्स बर्नार्डो. तो बर्नार्डो, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग पीपल इन द चैट, भाई वो एक एक्स ब्राइटन प्लेयर रह चुके हैं. ठीक है, तो मे बी देयर इज समथिंग टू इट दैट आई एम गेसिंग मे बी पॉटर नोज मोर देन अस. मैं अभी भी यार आदत डाल रहा हूँ whether it is basically Tuchel or not. I'm like अभी तक सोच रहा हूँ कि whatever it is. And yes, I don't know, people in the chat, आप लोग बोलिए again if people who join late. And Shrey, what do you think यार? मतलब what is your prediction by the way, going by the lineup and looking at that strong bench? हमारी bench बहुत ही strong है. I think Ankit bhai, if you look at the lineup of Salzburg, it's like their B lineup. Like Sesko is not there, centre back, the real centre back is not there as well. And for me, Ankit bhai, as much as I really think in that opinion, I really think Ankit bhai that it's a weak lineup of them. And I think if you do not beat Salzburg with the lineup that they have got, I think मेरे को जितना लगता है अंकित भाई, this could be a problem. अगर हम इस B lineup को नहीं हरा पाए, क्योंकि सेस्को भी नहीं है, तो वो मैं कहूंगा वरी साइन है कि अगर हमको ना हरा पाए इतने फुल स्ट्रेंथ टीम से. बैक थ्री ही लग रहा है मेरे को. अगेन मतलब जैसे श्रेय ने बोला, माउंट कैन बी यूज, बट अगेन आई डिसएग्री ब्रो, बिग टाइम आई डिसएग्री. मतलब अगर वो है उनका फॉर्मेशन देन सो बी इट, लेकिन आई डोंट थिंक दैट माउंट शुड बी यूज्ड इन दैट पोजीशन. यार माउंट ना, पता नहीं आप वो क्या समझ रखे हो भाई. माउंट क्या नमक है क्या? खाने में नमक जाए कहीं भी डाल दे तो टेस्ट आ जाती है. दैट्स व्हाट, कहीं भी डाल दो यार. ऐसे नहीं होता यार माउंट का. मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल द गाय इज नॉट इन फॉर्म. You play him in a number 8 position, so I hope that is not the case. I am thinking that it's almost the case that the fact that they don't have like a proper DM except for Zakaria. I think maybe वो ही reason लग रहा है मुझे, nothing else. Because again मैं अगर bench भी देख रहा हूँ, Zakaria है
तो वही शुरू करने के लिए तैयार नहीं होंगे. जकारिया लाइक ऑफ फफाना, आप लोग इन द चैट बोलिए. लेकिन लेट्स क्विकली मूव ऑन. आई नो दैट श्रेय, मैं काफी देर से चेल्सी के बारे में बात कर रहा हूँ. आई नो दैट लॉट ऑफ पीपल इन द चैट नो न्यूट्रल्स एज वेल. तो विल कम बैक टू चेल्सी इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स. लेकिन मीनवाइल मैं क्विकली दिखाना चाहूंगा अदर लाइनअप्स भी. मीनवाइल मिलान जागरेब का 2-1 ही है अभी तक. पीपल हु आर आस्किंग दैट. लेकिन मैन सिटी डॉर्टमंड अगेन इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि 4 लोग हैं मैन सिटी में जो डॉर्टमंड में खेल चुके हैं पहले. ठीक है, तो अगेन मैं शेयर करूंगा यहाँ फॉर्मेशन. rather I think there was a lot of news that were made between say Haaland and Bellingham in the build up to this game. तो क्या लगता है, मतलब the fact that वो लोग खेले थे क्वार्टर फाइनल्स में 2 साल पहले, that is main reason आपको लगता है? 2 साल पहले भी नहीं, 1.5 साल पहले, राइट? अपने ही जब चैंपियंस लीग रन था, तो I think they beat Man City beat Dortmund 2-1. So do you think that was one of the main reasons for that talk? क्योंकि वहां पर एक controversial moment था, I remember, about one of the goals. लेकिन come on, surely Haaland has to be the man in this game. I think, and that part, Ankit bhai, as you asked, I think that's not the reason. I think City are a very well scouted team. तो उन्होंने देखा होगा, I think उसके बाद भी एनालाइज करा होगा, एंड क्योंकि रिलीज क्लॉज सेट इन हो गया, आई थिंक वहीं से उन्होंने साइन करा. आई थिंक सिटी का यही है. मैं थोड़ा सा अंकित भाई हैरान हूँ, क्योंकि हालैंड जैसे इंजरी प्रोन है. गोल हो गया quickly. इसका मिलान का? Yeah, Milan have scored one more, so looks like Milan are getting 3 points. So all the more pressure on Chelsea to get the 3 points. मैं तो मतलब I'm happy for Milan, obviously supporting Milan as well. भाई बहुत ही बढ़िया गोल था. इनफैक्ट भाई फाड़ दिया literally. It was like literally from the left wing and then boom, man, nice one. चलो please. I think again मैं quickly check कर रहा हूँ. Let me just check quickly. Yeah, I think it's definitely a goal. No offside. Yeah, please continue. Pobega scoring. या अंकित भाई मैं थोड़ा स्टन्ड हूँ लाइक डॉर्टमंड के साथ कि सॉरी सिटी के साथ डॉर्टमंड के मैच में, कि मुझे लगा था कि हालैंड इंजरी प्रोन है जैसे हमेशा से था. बिग अप टू अभिषेक भाई एज वेल. तो मुझे यही लग रहा है अंकित भाई इसमें बहुत ही स्केयर वे में सिटी के लिए, अगर मैं सिटी फैन होता, कि इतने ज्यादा मैच खिला रही है, व्हाई अल्वारेज को नहीं खिला रहे और प्लेयर्स को चांस दे सकते हैं? क्या ये रिस्क नहीं है? क्योंकि वुल्स के साथ मैच, लाइक सिटी का मैच नहीं पोस्टपोन हुआ, तो सिटी इसके बाद भी सैटरडे को आई बिलीव अंकित भाई का मैच, तो वेडनेसडे सैटरडे इतने सारे मैच हालैंड खेलेगी, तो कोई इंजरी को होने की चांस आप सरप्राइज नहीं हो रही कि रोटेशन नहीं हो रही सिटी में? नहीं, एक्चुअली आज तो हुई है. इनफैक्ट मारेज और ग्रिलिश has not been starting matches, right? So मारेज एंड ग्रिलिश आर कम. सो मतलब वही है, they cannot play everyone ना. तो आई नो अल्वारेज इज थोड़ा अनलकी, आई अग्री देयर, लेकिन मे बी ही थिंकिंग अल्वारेज एट द वीकेंड, हु नोस. इसलिए मे बी टुडे स्टार्टिंग ग्रिलिश एंड मारेज. De Bruyne is a Champions League game, तो De Bruyne Haaland तो मतलब इनएविटेबल है. अभी तक they've not qualified yet, right? So it's quite kind of evident कि वो लोग खेलेंगे. I think the names, proper name जो हमेशा खेलेंगे ना, are Ederson. This for UCL Fantasy also, you know, Ederson, Cancelo, then you have Rodri, De Bruyne and Haaland. ये 5 fixed है. Gundogan maybe the fact is हाँ, he's been playing very well, plus Dortmund के साथ है. That is why Gundogan is playing, you know. Then Akanji again Dortmund के साथ है, is what I'm guessing. हाँ, Aki along with Akanji थोड़ा सा surprise जो मैं, लेकिन Aki has had a brilliant start to the season. तो मतलब I'm not as surprised as many City fans जो comments में बोल रहे थे. Again, yes, Dortmund है not exactly the best form Dortmund में. याद रखिए भाई, weekend में they lost 3-0. तो I don't have so much confidence on Modest. लेकिन Reina, he's been really good when he comes on. And Bellingham obviously playing in this role will get the freedom to kind of roam in front of, you know, Emre Can is what I'm guessing. तो लेकिन आज काफी specific role होने वाला है even for Bellingham, because he has to protect that kind of backline which is not looking good in my opinion. Having said that, Shrey, I think I think there were a couple of comments. So meanwhile Bellingham के बारे में, तो I think Marco Reus ने कुछ बोला है. And yes, people, I know that there are other matches. हम आएंगे. Please stay patient and, you know, be there, because we've been speaking about Chelsea for a long while. So it was evident that I came to this match and I will come back to Chelsea match. ठीक है. So this is what it was, man. Marco Reus saying like he already had something to this game, to his game in all aspects of his position that I had never seen before for a player of his age. He's taking steps towards reaching his full potential, which will make him one of the best players in the game. Shrey, where are you on Bellingham, yaar? मतलब, do you think Bellingham का moment आ गया है to make that big move, or do you think नहीं, मतलब is he not influencing Dortmund as much as probably he could? I think it's come the time for him, because for me Dortmund में अंकित भाई I don't think वो इतना प्रूव कर पाएगा अपने आप को, क्योंकि
आई थिंक अब टाइम आके किसी बड़ी लीग में जाके प्रूव करना, नो डिसरिस्पेक्ट टू बुंडेसलीगा, अच्छी लीग है लेकिन आई थिंक लाइमलाइट में आना। प्रॉब्लम ये है बंडेस चाहे बायर्न ही चले जाए, प्रॉब्लम ये है डॉर्टमंड कंपैरेटिव नहीं है तो उन पे आंख नहीं जाती लोगों की जिस वे में, क्योंकि डॉर्टमंड से लोग ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते। बट आई थिंक मैं ये कहूंगा कंप्लीट तो नहीं, क्योंकि पोटेंशियल तो एक इतने यंग प्लेयर में बहुत ज्यादा है, वो तो अभी भी रियलाइज करना इम्पॉसिबल है। जैसे मेसन माउंट का हम सबने पिछले साल कहा था देखो ये पोटेंशियल है, लेकिन अब लग रहा नहीं है। तो आई थिंक जितना प्लेयर ग्रो होगा उतना पोटेंशियल आएगा। बट येस आई थिंक ये मैं जरूर कहूंगा, रूइस की बात से एग्री करूंगा अंकित भाई कि ही इज वन ऑफ द मोस्ट कंप्लीट मिडफील्डर राइट नाउ। डिफेंड भी कर सकता है, ही कैन अटैक वेल, स्लिकी है बॉल पे, एंड वन ऑफ अ काइंड है जो हम ज्यादा देखते नहीं है। या तो आपको डेक्लन राइस मिलेगा हु इज गुड विद डिफेंसिव एबिलिटीज, या आपको गुड विद द बॉल मिलेगा। सो दैट्स वेयर अंकित भाई आई एम वेरी एक्साइटेड। और यही है कि नेक्स्ट ईयर तो पुश मारेगा वेदर टू रियल और लिवरपूल या इवन चेल्सी। लेट्स सी कहां पे आता है ये। Exactly, yeah. Football, bloody amazing. We had shared in the preview as well. It's Pep Guardiola's 150th Champions League game, so it's big one for him as well. And yes, Haaland के बारे में secrets जाने वाले थे भाई लोग, लेकिन Jude Bellingham is like, I'm really not sure how to be honest. Like, you know, probably there's no way of stopping Haaland at this point. आप लोग बोलिए, what is the best way to stop Haaland at this point? Like, do you see? बाय द वे हालैंड अगर इसी रेट पे स्कोर करते रहे ना इन द प्रीमियर लीग एज वेल, हम आएंगे उस पर वीकेंड पे, लेकिन आई थिंक एज पर द रेट he'll be ending more than 60 goals. Obviously होने नहीं वाला, लेकिन I'm just saying that is the amount of, you know, as in goals that he scored already. तो मतलब next level है. But again, coming back to Chelsea, man, मतलब what are you most looking forward to today? आज what is the most one aspect आप बोल रहे हो नहीं पॉटर का ये डिफरेंट होना चाहिए? आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल अंकित भाई, आई थिंक हम सब एग्री करेंगे कि पहले तो मैं शेप ही देखना चाहूंगा कि क्या शेप है, क्या सच्ची में एसपी सेंटर बैक खेल रहे सिल्वा, क्योंकि अगर वो है तो आई विल बी स्टन्ड टू सी कि क्या प्लान है नए मैनेजर का। दूसरी बात ये है मैं ज्यादा वो देखना चाहूंगा पोजिशनल प्ले कहाँ की कहाँ है, क्योंकि मैंने जितना सुना है ब्राइटन को, जैसे मैंने एक दो बार देखा है वो 3-3-3-1 की शेप में भी खेलते हैं। एंड उनके जो दो प्लेयर्स आई थिंक एक तो सॉली मार्च खेलता है विंग्स पे, और जिस तरह उन्होंने पैस्कल ग्रॉब को प्ले करा है, जैसे पैस्कल ग्रॉब एक डिफेंसिव मिडफील्डर होता था, अब वो बॉक्स के अंदर जाके फॉक्स इन द बॉक्स का काम कर रहा है। तो मैं ये देखना चाहूंगा कि कैसे यूज करते हैं माउंट को, हावर्स को, क्योंकि हावर्स अंकित भाई 4-3-3 में नहीं खेल सकता, ही इज नॉट अ विंगर। तो मैं ये देखना चाहूंगा कि हमारे नए मैनेजर की शेप क्या है, क्योंकि फॉर्मेशन सेम ही लग रही है ट्यूकल की तरह, वही बैक थ्री रहनी है, लेकिन वो क्या डिफरेंस रहेगा हमारे प्रीवियस मैनेजर से कि सडनली जो अटैक इतना डिसअपॉइंटिंग लग रहा था वो क्या चीज लगे। मैं वो ज्यादा देखना चाहूंगा कि किस पोजीशन पे आए, तो उसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ, पोजीशनल प्ले एंड द शेप। या हैवर्ट्स का इंटरेस्टिंग बोला आपने, क्योंकि हैवर्ट्स का आई फील दैट आप अगर केयरफुली देखो अ लॉट ऑफ टाइम्स ही यूज्ड टू हैव दैट, यू नो, एज एन अ मैकलिस्टर और अ ग्रोस काइंड ऑफ प्लेइंग मोर सेंट्रली इन बिहाइंड द स्ट्राइकर। तो हैवर्ट्स कैन एक्चुअली प्ले दैट रोल। तो ऑन पेपर आप 4-3-3 सोच सकते हो, बट इट कुड बी आल्सो बी अ 4-3-1-2 इन अ सेंस मैचिंग सॉल्जबर्ग। तो मे बी it was more about, you know, a man-to-man wala marking in terms of defense, or attacking wise में he felt that maybe Havertz is stronger, so why not go like for like is what मैं सोच रहा हूँ। मतलब वही hostel for courses देखकर maybe he's wanting to start up again. Time will tell what really सच है। लेकिन again we would love to see that first 10-15 minutes यार जो होता है चेल्सी का। Again people have joined late, आप लोग भी बोलिए, मतलब again I'm going to put that lineup, लेकिन before that lineup I know that रियल मैड्रिड का भी लोग बोल रहे थे भाई। अगेन आई नो मजाक में हमने दिखाया था इन टर्म्स ऑफ, यू नो, ट्रोलिंग बाय रोड्रिगो टू बार्सिलोना, वो तो चलते रहता है भाई इन टर्म्स ऑफ, यू नो, एज इन बैंटर। लेकिन अगेन रियल मैड्रिड रूडिगर स्टार्टिंग इन अ सेंटर बैक लुक्स लाइक, और आई नो थोड़ा सा एक्स चेल्सी एलिमेंट है यहाँ पर रियल मैड्रिड में, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम शेयर कर लेंगे क्विकली। It's a big game. Leipzig, in my opinion, not as easy because again Leipzig का new manager bounce है, Marco Rose is there, Kamavinga starting today, ठीक है, और you have Rudiger with Nacho being there. अब Nacho, as per this website, they are saying that Nacho खेलेंगे left back. I won't be surprised अगर Rudiger खेलेंगे left back. Lot of things हो सकते हैं, I don't know. लेकिन the big news is Rodrigo starting as striker and not Eden Hazard. भाई श्रेय क्या बोल रहे हो उस पर? आई थिंक ईडन हज़ार्ड का तो उनके पे बहुत टाइम से लग रहा है कि एंचेलोटी डजंट प्रेफर हिम, जो सैड है, बट आई थिंक ईडन हज़ार्ड करियर है रियल अंडर इसको स्टनिंग चीज हो जाए, इट लुक्स ओवर। आई थिंक अंकित भाई लाइनअप पे मुझे लगता है दिस कुड बी द मोस्ट हाई स्कोरिंग गेम आज की इस मैच डे पे, क्योंकि आई थिंक रियल मैड्रिड फैंस चैट में उनको याद होगा कि उनको सबसे ज्यादा डिस्टर्ब अब तक चेल्सी में जब हमारे मैचेस हुए थे, सरप्राइजिंगली वर्नर थे प्लेयर जो वो हैंडल नहीं कर पा रहे थे। वर्नर ने रियल लाइक ही हैड रियल ऑन रोप्स, एंड क्योंकि अंकित भाई रियल इस मैच में फ्रंट फुट पे होगी, Real will leave space, and
आई थिंक वर्नर नाचो के सामने, वर्नर रूडिगर के सामने, इवन जहां पे हमें पता है रूडिगर कई बार एग्रेसिव हो जाते हैं ओवर द लिमिट, तो अंकित भाई आई थिंक ये टीम वर्नर, एनकुकू, फॉसबर्ग एक बड़े क्लेवर प्लेयर्स है। आई थिंक इतना इजी मैच नहीं है। एंड जैसे आपने बिल्कुल सही बात कही, आप कह नहीं सकते कि कौन सा लेफ्ट बैक पे खेलेगा, कार्वरहाल भी लेफ्ट पे जा सकता है, रूडिगर भी जा सकता है लेफ्ट में। तो आई थिंक अंकित भाई दिस इज अ वेरी एक्साइटिंग मैच। मुझे तो पता फीलिंग आ रही है 3-2, 4-3 भी हो सकता है, 3-3 भी हो सकता है। मुझे बहुत यू अच्छी मीन फीलिंग आ रही अलाबा, है। एग्जैक्टली अलाबा, रूडिगर और नाचो में तीनों ही खेल सकते हैं। हाँ, एक चीज कुणाल मैं ये बोलूंगा, देखिए अलाबा हैज पब्लिकली, आई डोंट नो, इट्स बीन रिपोर्टेड दैट वो खेलना चाहते हैं सेंटर बैक, और he doesn't want to move अलाबा फ्रॉम सेंटर बैक as per the reports. Again in between games आपने देखा है दोनों चीज हुआ है। तो अगेन पीपल इन चैट आप बोलिए, लुकिंग एट दिस लाइनअप क्या लग रहा है लाइप्जिग की? आप फॉरवर्ड लाइन काफी आई थिंक एम्बिशियस है। अब प्रॉपर 4 फॉरवर्ड्स के साथ खेल रहे हैं यार आज। मतलब आई नो दैट दे हैव गॉन इन द पास्ट लाइक दैट 4-2-3-1 खिलाते, लेकिन दे हैव वन प्लेयर यहाँ पे फॉर एग्जांपल कॉनराड लाइमर। तो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग दैट टुडे, आज वो है नहीं लगता है, ही इज प्रोबब्ली इंजर्ड। सो instead of playing someone who defends, he's actually gone with Forsberg, Marco Rose. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है मेरे लिए। आप लोग बोलिए, गोल्स गलोर यार, ये गेम डेफिनेटली अच्छा रहेगा इन माय ओपिनियन। राउम इज समवन जो एवरीवन इज लुकिंग फॉरवर्ड टू लुक एट लाइप्जिग। स्लोबोत्जाई, फोर्सबर्ग, इंकुकू और वर्नर, भाई दिस इज समथिंग एल्स विद हैदरा ऑलरेडी बीइंग स्काउटेड। तो सिमिकन ऑल्सो बहुत अच्छा था उनका फर्स्ट मैच डे। भाई मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है, इसलिए मैंने दिखाया था क्विकली। 6-3 रियल मैड्रिड, आई फील दिस गेम गॉट गोल्स। यू नो व्हाट, 6-3 तो नहीं मैं, लेकिन मैं समथिंग लाइक 3-2 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, सच में मैं बोल रहा हूँ। दैट्स हाउ आई एम looking at Juve full back Sandro, and Forsberg will play as Cam. Exactly, he'll play as Cam, but again I don't know how good is his defensive ability. Hello to Gaurav, कैसे हो भाई? अंकित भाई, what's happened to Alex Sandro? He was so much linked with us. भाई he's over man. अभी चले गया, उसका प्राइम चला गया ऑलमोस्ट। लेकिन अगेन भाई और कोई मैच डिस्कस करना है तो पहले आ सकते हैं बिफोर चेल्सी, बिकॉज अभी लास्ट फ्यू मिनट्स में वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग चेल्सी, ठीक है, इन डिटेल। ऑफ कोर्स विल कम बैक। हाँ, मैं क्विकली यहाँ पे, बिकॉज आई थिंक श्रेय आप लेट ज्वाइन किए थे, मैं कल के मैच में क्विकली मैं आने वाला हूँ आपके राय पर भी। तो दिस वाज अ मोमेंट जो काफी बारसा फैंस बोल रहे हैं, हम वॉच अलोंग किए थे। I don't know if you got a chance to look at it, but again, people in the chat, आप लोग बोलिए, was this a nailed on penalty? This was something that I think between Davis and Dembele हुआ था। Did you get a chance to look at it, Shrey? आई थिंक जो मैंने भी उस टाइम पे देखा था, मुझे भी फर्स्ट इंस्टिंक्ट पे तो पेनल्टी ही लगी थी इन माय ओपिनियन। तो आई थिंक थोड़ा मुझे भी लगा है बादशाह के साथ थोड़ा हुआ रॉन्ग। एंड आई थिंक मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं उस टाइम पे क्या स्कोर था अंकित भाई, पर जितना मैंने इस टाइम देखा था इसको फर्स्ट इंस्टिंक्ट पे, मेरे को लगा था क्योंकि ये तो पेन है आई थिंक। एंड आई थिंक थोड़ा कॉस्ट तो कर गई है बादशाह को। आई थिंक बादशाह अच्छा खेली थी इस मैच में, सो बिग अप टू देम। बट आई थिंक ओवरऑल इवन चाहे वो भी जाती है, स्टिल थिंक बायर्न वुड हैव वोन। बट वही, इफ डिसीजन इज गॉन रॉन्ग, हम भी बोलते हैं जो चेल्सी का जाता है, तो वी हैव टू बी अंडरस्टैंडिंग। एंड आई थिंक वीआर के साथ तो नहीं जाना चाहिए था। या मतलब आई डोंट नो मैन, मतलब आप लोग बोलिए 50% बोल रहे फुटबॉल क्रिक्स यार, मेरे लिए पेनल्टी था, लेकिन दिस वाज नॉट द सोल रीजन व्हाई बारसा लॉस्ट। मतलब लेट्स बी रियल, जो सेकंड हाफ में सब्स्टिट्यूशन था गुरेट्स्का, ही रियली चार्ज द मिडफील्ड टू द नेक्स्ट लेवल इन माय ओपिनियन। चलो, लोग बोल रहे यूवेंटस का मैच भी है, वो क्विकली देख लेते हैं बिफोर कमिंग बैक टू चेल्सी। चलो ठीक है, तो ये भी इंटरेस्टिंग है। आई वुड नॉट बी वेरी वेरी kind of excited looking at Juventus lineup. I don't know what Shrey thinks and what the chat thinks. I know Benfica, by the way, in my opinion, this is a 6-pointer almost. ठीक है, तो they are like इन दोनों के बीच में, because PSG, Maccabi Haifa, come on, let's be honest, PSG जीतने वाली है. You can say Messi, Mbappe, etc. Come on, they should win it. In all honesty, लेकिन this one is interesting because Benfica जीती थी first match day में and Juventus lost. So अगर Juventus lose today, man, I'm telling you, bhai, Allegri is under a proper pressure. Not that he's already. लेकिन very interestingly, Allegri जा रहे हैं मिलिक और व्लाहोविच के साथ, with Kostic and Cuadrado providing that width. Is it a proper Juventus style of the old जो he's trying वापस से, क्योंकि he doesn't have so many players who could play that cam role, right? क्योंकि Pogba injured है. तो do you think this works? आई थिंक अंकित भाई ऑन द स्टाइल और लाइनअप जिस तरह मैं देख रहा हूँ, लाइनअप इज गुड, बट यही है सैडली वो यूज नहीं कर पा रहे लाइनअप को, इस तरीके से खेल नहीं रही। लाइनअप देखने में तो अच्छी है नो डाउट, लेकिन यूवेंटस खेल नहीं रही। आई थिंक सीरिया में भी सैलेंटिनो के सामने इनको एंड में आई थिंक 2-0 से इन्होंने कम बैक करी है। आई थिंक दे वर चीटेड आउट, इनको जीत जाना चाहिए था। दैट वाज एब्सोल्युटली ऑफुल डिसीजन जो हुआ इनके साथ।
बट आई थिंक अंकित भाई मैंने पढ़ा था कहीं क्योंकि किसी सीरिया जर्नलिस्ट ने डाला था कि शायद सैक करना बहुत डिफिकल्ट है, जैसे ब्रेंडन रॉजर्स के लेस्टर में प्रॉब्लम है, आई थिंक कहीं ना कहीं पैकेज की प्रॉब्लम है जो एलेग्रीनी को ने दिया है, कॉन्ट्रैक्ट है, वो सब है, तो शायद सैक उनके पास ऑप्शन है ही नहीं। बिग अप टू अंशुल भाई एज वेल। और अंकित भाई मुझे यही लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता अंकित भाई सैक कर सकते हैं, स्पेशली आई थिंक इवन थॉमस ट्यूकल अवेलेबल है, दैट्स अ बिग थिंग। आई थिंक मैं तो चाहूंगा ट्यूकल को अपॉइंटमेंट मिल जाए, बट आई थिंक स्क्वाड अच्छा है, आई थिंक इट कैन बी मेड बेटर, बट एलेग्री डिस्ट्रॉय कर रहा है स्क्वाड को। लाइक वालोविच मैंने फ्योरेंटीना में देखा, ही वाज सो गुड, इतना अच्छा था। एलेग्री ने सडनली उसको पता नहीं क्या बना दिया, एंटी कैरोल बना दिया लिटरली, लाइक ही इज यूजिंग हिम टू एब्सोल्युटली पैथेटिक वे। मैं सरप्राइज हूं कि मैं आपकी ओपिनियन चाहूंगा, और चैट में भी अगर यूवेंटस फैंस है कि व्हाट्स गोइंग ऑन, क्योंकि टीम अच्छी है ऑन पेपर। Exactly. मतलब नहीं वही है मतलब it's Allegri ball which is not working, simple as that. Milik is actually looking like the signing for Juventus mainly more than anyone else. यार hopefully यार Milik continues his form. लेकिन वही है, Milik has been that player. मतलब आपको याद है Milik नापोली में थे ना along with Higuain if I remember right. तो I remember those days, you know, he used to score a lot of goals. लेकिन again, you know, over a course of time, I don't think he's been that player consistently. Time will tell. Let's see what it is. Again, people, let's actually please don't slander West Ham legend. कोई नहीं, इंटरेस्टिंग दैट भाई। मीनवाइल मैं देख रहा हूँ, मेरा रिमोट कंट्रोल किधर गया। मिलान आर 3-1 with the last minute of stoppage time left. So looks like Milan definitely ले लिए 3 points. लेकिन on the other hand, we have what Shakhtar 1-1 with Celtic, Mudryk scoring, and that's what was expected. लेकिन coming back to Chelsea. Oh, let's see अगर लाइनअप अपडेट हुआ है on the website I'm using. Again लाइनअप अपडेट नहीं हुआ है, तो श्रेय वही लग रहा है यार। I don't know man. Again, what is your call? Like, you know, having seen Brighton, क्या लगता है किस मोमेंट में बेसिकली पॉटर मेक्स चेंजेस? इज ही अ गाय हु मेक्स अर्ली चेंजेस लाइक मे बी अ प्राइम मोरिन्यो, और इज ही अ गाय जो वेट करते हैं टिल द एंड मोमेंट लाइक अ कॉन्टे, और ही इज लाइक अ टुकल जहां पर यू नो ही गोज बाय द सिचुएशन? क्या 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 आपको लगा है अभी तक? अरे मुझे ये लगता है अंकित भाई पोर्टर का, क्योंकि मैंने ब्राइटन को इतना ज्यादा नहीं देखा बाद सम मैचेस एंड चेल्सी के साथ, पर यही मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं अगर वो करते भी होते चेंजेस, मुझे ये लगता है कि जो बड़े क्लब में आओगे ना आप, क्योंकि ब्राइटन का बेंच और चेल्सी का बेंच में जमीन अंतर का फर्क है। लाइक द बेंच क्वालिटी चेल्सी हैव, द प्लेयर्स वी हैव गॉट, हम चिलवेल को ला सकते हैं, वी कैन ब्रिंग सो मेनी क्वालिटी प्लेयर्स, प्यूलिसिस, ज़िएच, उनके पास एक क्वालिटी नहीं थी, तो यहाँ से भी डिफरेंस आता है। तो उस वे में मैं देखना जरूर चाहूंगा कि किस वजह से चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे तो बैक 4 दिखा रहे हैं, तो आई थिंक इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। अंकित भाई आप एक बार अपनी कॉल जरूर बताइए। मुझे तो नहीं लगता 3 एट द बैक है, क्योंकि एसपी तो नहीं खेल सकते मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सेंटर बैक। आगे आप बताइए कि आप ट्रस्ट करेंगे एसपी को टू प्ले एज अ सेंटर बैक? नहीं, एक्चुअली स्पीकिंग ना एसपी खेले बैक फोर में, सेंटर बैक, फॉर पीपल सेइंग दैट नहीं पहली, लेकिन प्री सीजन गेम्स में खेले, बहुत खेले। ऐसे नहीं है कि एक गेम में खेला है, प्री सीजन में बहुत बार ही इज फिटेड इन। लेकिन दैट्स अ प्योरली डिफरेंट वन। कम ऑन, यू आर प्लेइंग अगेंस्ट सॉल्जबर्ग। अगेन पीपल, लेट मी रिमाइंड यू, लास्ट सीजन सॉल्जबर्ग ने क्वालिफाई किया था फॉर द राउंड ऑफ 16। यस, आई एग्री कि एडेमी नहीं है, आई एग्री कि एरनसन नहीं है, लेकिन फिर भी दे हैव अ सेस्को, दे हैव एन ओकाफोर, they have their intensity, they have the press, वो तो continue। by the way, meanwhile मिलान जीत गई, तो congratulations to मिलान, absolutely भाई। तो मिलान as things stand, if I'm not wrong, are on top of the group। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कुछ करना पड़ेगा। Definitely we have to do lots yeah, tonight। लेकिन again people, let me know in the chat what are you thinking in terms of the score line, what are you predicting? अगेन आप देखिए बेंच पर श्रेय, यस आई अंडरस्टैंड 5 सब्स्टिट्यूशंस है, फुटबॉल किक्स बोल रहे हैं he rotates the squad basically midweek games के लिए etc. I can understand, लेकिन श्रेय that is the whole point। अभी चेल्सी का कोई गेम है नहीं वीकेंड में, और चेल्सी का कब नेक्स्ट गेम है? बहुत 2-3 हफ्ते बाद में, आफ्टर द इंटरनेशनल ब्रेक, करेक्ट? वी डोंट हैव एनी मिडवीक गेम इन द नेक्स्ट वीक। सो क्या क्या लॉजिक हो सकती है? मतलब डू यू सी एनी लॉजिक इन रेस्टिंग फोफाना, in resting Koulibaly, in resting Chalobah? मतलब आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, होता नहीं जनरली। आई थिंक अंकित भाई फॉर मी हैज मच एज शायद स्टेटमेंट आई थिंक फैंस माइट नॉट एग्री। मुझे लगता है कि कहने के जब नया मैनेजर आता है, कहीं ना कहीं ही वांट्स टू प्लीज द सीनियर प्लेयर्स इन द टीम, इसलिए मुझे लगता है कि वो इस लाइनअप के साथ गए हैं। मुझे ये लगता है क्योंकि एसपी की सेंस मुझे नहीं लगती थी इस गेम में फॉर मी, अंटिल कोई सरप्राइज हो जैसे न्यू मैनेजर है। तो मुझे कहने की लगता है कहने की स्पॉटलेस से दूर करना। पर ये है कि अगर मैं बेंच देखूं अंकित भाई, मुझे इतना पता है कि जो हमारी स्टार्टिंग लाइनअप है इनमें से बहुत प्लेयर्स इंटरनेशनल ड्यूटी में जाएंगे, बट फोफाना मुझे नहीं लगता इंटरनेशनल ड्यूटी में जाएंगे, क्योंकि मुझे याद नहीं है पर कोई उनके बड़े मैचेस है। चलोबा नहीं जाएंगे, आपके कूली बाले के मुझे पता नहीं है मैचेस है नहीं है, तो वो नहीं जाएंगे।
कहीं ना कहीं शायद मैनेजर की प्रिपरेशन हो कि इनके साथ ट्रेनिंग ग्राउंड पे काम करना है एंड टू प्ले द प्लेयर्स जो जा रहे हैं कि ये भी स्ट्रैटेजी हो सकती है देखने वाली। तो मैं इंटरेस्टिंग हूं अंकित भाई, लाइक व्हाट द शेप इज, इसलिए मैं मैच के लिए बहुत एक्साइटेड हूं कि हम शेप क्या खेलने वाले हैं। लेकिन अगर एसपी सेंटर बैक है एंड ओकाफोर उनके ऑलरेडी हाईएस्ट स्कोरर है सीजन, मेरे ख्याल से 6 गोल मार चुके हैं, आई थिंक एक डिजास्टर अनपेंडिंग है अंटिल मैनेजर डज अ सरप्राइज। मुझे अभी भी लगता है कि कुछ ऐसा सरप्राइज ना हो जाए कि जॉर्जिनियो ना सेंटर पे एक्ट करे, पर वो तो सबसे बड़ा डिजास्टर होगा क्योंकि जॉर्जिनियो कैन नॉट हैंडल फिजिकलिटी, ये हमें भी पता है अंकित भाई। आई थिंक ओह, दिस इज समथिंग जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया। यस, आई थिंक यू नो व्हाट, अगेन मैं यहाँ पर आई एम जस्ट थिंकिंग, आई नो हमें पता ही लग जाएगा भाई 22 मिनट में लेकिन हो सकता है, जस्ट सेइंग इट आउट देयर, दैट जस्ट थिंक अबाउट इट। श्रेय आपने बोलना है डेफिनेटली। हाँ, एक सरप्राइज रहेगा, फिर भी मैं बोलता हूँ, बिकॉज सिल्वा के पास आई डोंट थिंक ही हैज दोज लेग्स। आई नो इट नेवर डिपेंडेड ऑन पेस, लेकिन अगेन डजंट हैव दोज लेग्स। थिंक अबाउट इट पीपल, सोचिए एक बार, सब लोग इन द चैट, डू बैक मी, ओके। जॉर्जिनियो प्लेइंग एज अ स्वीपर, ठीक है, प्लेइंग एज, एक होता है ना, व्हेन इन पोजीशन प्ले एज अ डीएम, व्हेन आउट ऑफ पोजीशन प्ले एज अ सेंटर बैक। तो जॉर्जिनियो प्लेइंग एज अ स्वीपर एंड यू कैन हैव एसपी एंड सिल्वा बिसाइड हिम, ठीक है, एंड देन यू हैव अ कुकुरेया एंड जेम्स एज विंग बैक्स विदाउट पोजीशन, with Jorginho, Mount and Havertz in midfield and Aubameyang, Sterling up top. जो very coincidentally Tuchel himself in terms of formation had played in this very last match, ठीक है। तो मे बी इन अ वे ही इज लाइक कंटिन्यूएशन रख रहे हैं, मतलब लास्ट मैच में जो खेला था, ही हैज द टीम शीट इन फ्रंट ऑफ हिम, ही इज प्लेइंग द सेम फॉर्मेशन, बट यू आर राइट, मे बी ही इज गिविंग एसपी एक चांस बिकॉज ऑफ यू नो एक सीनियरिटी, और बिकॉज ही इज द कैप्टन एट द एंड ऑफ द डे। इसलिए मैंने आज पोल भी डाला था कि कौन होने वाला है कैप्टन, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था एसपी शुरू करेंगे, सच में मुझे लग रहा था ये एक बेस्ट एक्सक्यूज होगा फॉर हिम टू गिव द आर्म बैंड टू थियागो सिल्वा, जो बहुत दिन से है काइंड ऑफ डिजर्व कर रहे हैं। सेल्टिक 1 शाख्तार 1, यस वो भी हो गया है, बिल्कुल, थैंक्स। और यस फुटबॉल की जो बोल रहे हैं ना, एसपी स्पेन के लिए बैक फोर खेलते या, बट लेकिन वो राइट बैक खेलते हैं यार, नॉट राइट सेंटर बैक, दैट्स वेरी सरप्राइजिंग। आई स्टिल रिमेंबर हिज स्मार्ट एज टच अगेंस्ट यूनाइटेड लास्ट सीजन, नेवर वांट हिम लास्ट मैन डिफेंडिंग Abhishek, manager, I just became the devil's advocate for once. He's talking about Jorginho. Shray. Pretty much sure. Jorginho सबको याद है भाई, आर्सेनल के साथ, मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ जो हुआ था लास्ट 1-1.5 साल में, सब लोग को याद है। तो दैट इज वन थिंग दैट यू कैन टॉक अबाउट इट, लेकिन वही है। अभिषेक, आप लॉजिक करके बताइए यार, मैंने जितनी फुटबॉल देखी ना, अगेन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, श्रेय, टैक्टिकली आई थिंक इट कैन वर्क टैक्टिकली। See, देखिए, without possession, Jorginho steps back. With maybe you have two people protecting him, and then you have wing backs, of course, giving the width to the midfielders. लेकिन without possession, or with possession rather, Jorginho kind of steps into midfield. क्या लगता है आपको? अरे अंकित भाई, मुझे तो यही लगता है कि ट्यूकल का जितना मुझे याद है, ट्यूकल तो 5-5 की शेप खिलाते थे, जहां पे वी यूज्ड टू अटैक विद 5 अटैकर्स, वी यूज्ड टू डिफेंड विद 5 डिफेंडर्स, ये शेप थी। लेकिन एंड में जिस तरह हम खेल रहे थे लास्ट के 1-2 मैच में, ऐसा लग रहा था 9 डिफेंड कर रहे हैं, 1 अटैक कर रहा है। आई थिंक सबसे बड़ी बात, आई थिंक चेल्सी फैंस जो आप देखना चाहिए, मुझे लगता है वी ऑल वांट टू सी इट्स रिस्पांस, क्योंकि आज सैडली आइडिया लग जाएगा कि कहीं ना कहीं वाज इन द प्रीवियस मैनेजर के अंडर दे वर नॉट प्लेइंग विद द फुल डिजायर एंड सडनली बूम, या सच्ची में प्लेयर्स में प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर वो चीज हुई, आई विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड अगर आज फिर से वही चीज दिखी जो हमारे क्लब के साथ बहुत टाइम से दिख रही है कि ड्रेसिंग रूम टूटा हुआ था। तो ये चीज के इंटरेस्टिंग अंकित भाई में कि प्लेयर्स की इंटेंसिटी क्या रहेगी, क्योंकि जागरेब मैच में आप भी एग्री करोगे, आई थिंक चैट भी एग्री करेगी, इंटेंसिटी नहीं थी आई थिंक प्लेयर्स में, आप भी एग्री करोगे शायद इस मामले में। नहीं, आई एग्री, मतलब एट द एंड ऑफ द डे वही है, मतलब आई डिड सी अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग, आई डिड सी बेसिकली पिक्चर्स विद बर्ली, तो लुक्स लाइक एस्पिलिक्वेटा का इन्वॉल्वमेंट हैवी रहा है इन द लास्ट 48 आवर्स, सो मे बी दैट इज व्हाई ही इज एक्सपेक्टिंग टू हैव मोर ऑफ एस्पिलिक्वेटा, बिकॉज उसको भी एक चाहिए, लाइक कम ऑन, लेट्स बी ऑनेस्ट, देयर आर पीपल आउट देयर हु आर ऑलरेडी सेइंग पॉटर आउट, हु आर ऑलरेडी सेइंग बर्ली आउट। हाँ, देयर आर लॉट ऑफ पीपल सेइंग, अगेन मेजॉरिटी नहीं बोल रही, व्हिच आई एम ग्लैड अबाउट, लेकिन बर्ली आउट तो बहुत लोग बोल रहे हैं, आई नो दैट, दे आर बहुत अनहैप्पी है बर्ली के साथ। तो इन अ स्ट्रेंज सेंस ही हैज टू विन ओवर द प्लेयर्स, आई नो विनिंग ओवर द फैंस मतलब ऑन डे वन विल बी डिफिकल्ट, लेकिन वही है, उसे करना पड़ेगा वो, दैट इज समथिंग दैट ही हैज टू डू। मीनवाइल मिलान के गोल्स दिखा रहे भाई, बहुत ही बढ़िया। एनीवे, मीनवाइल लेट्स सी, लेट्स गेट 100 लाइक्स पीपल, डेफिनेटली हेल्प्स अ लॉट। लाइक बटन दबा दीजिए, और यहाँ पर श्रेय एफसी को भी सब्सक्राइब करिए, बाई चांस आपने नहीं किया है, इट इज टैग्ड इन डिस्क्रिप्शन बिलो।
Please Jorginho stick with those sideways backwards passing. Sorry, I know Delaney redeemed himself, but come on, man, he's not going to do that. Let's see. Graham Potter is one orchestrator giving assist to front five players in counter. Again, मतलब it is, I think, to see कि if Graham Potter एक थॉमस टुकल और एंटोनियो कॉन्टे का क्लियर था श्रेय दैट वो बहुत ही डायरेक्ट करते थे. ही यूज्ड टू डायरेक्ट basically, as in this is what supposed to be done, this is not supposed to be done, all those things, right? बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन दिखाते थे. How do you see Graham Potter, kind of being on the sideline? We have seen Brighton, he's one calm, collected guy, typical English guy like a Sean Dyche. How do you make of him? I think for me, Ankit bhai, he looks like a very calm person. बहुत ज्यादा calm लगता है ग्राहम पॉटर. I think ब्राइटन का भी मुझे याद है, I think शायद पिछले सीजन था जहां पे वो एक स्ट्रेच पे चले गए थे 9 मैच बिना जीते, लेकिन आई थिंक वो पैनिक नहीं करे. एंड ब्राइटन का जो पर्सनल था, आई थिंक डेनी वेलबैक, जो नील मॉपे था, आई थिंक दैट वाज लाइक वन ऑफ द मोस्ट रिडिकुलस अटैक कि वो स्टे अप कर गया लीग में. एंड दैट्स द क्रेडिट टू द मैनेजमेंट ऑफ पॉटर. आई थिंक अगर पॉटर ने वो चीजें देख ली है तो यहाँ पे उससे गंदा तो नहीं होने वाला. तो आई थिंक फ्रस्ट्रेट की मुझे नहीं लगता होने वाले है. एंड ही इज अ काम गाय. जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस लगी है, आई थिंक चेल्सी फैंस जैसे ऑनलाइन में कंप्लेन कर रहे हैं और दिस एंड दैट. सी फॉर मी वो चीज डिपेंड नहीं करती. आई थिंक मैनेजर डिपेंड करता है. वी शुड बैक अ मैनेजर नाउ. जो हो गया, यू कैन बी एंग्री विद दैट, बट हमें अपने मैनेजर को बैक करना चाहिए. द न्यू मैनेजर, द न्यू गैफर. एंड उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ये लगे जैसे उनकी लाइन कि इन लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क. अगर आप रोड के बाहर भी जाओगे वॉक करने तब फिर रिस्क है. उनसे पूछा गया था कि ब्राइटन से चेल्सी में जाना रिस्क है. ही सेड यस, बट लाइफ में आप बाहर घूमने जाओगे तब फिर रिस्क है. तो अच्छी लगी वर्डिंग. काम, यंग, हैप्पी मैनेजर है. और अगर मुझे लगता है उनको गुस्सा आएगा अंकित भाई, आई थिंक ही विल डिस्कस इन द ड्रेसिंग रूम rather than show in the touchline, my opinion. Okay, let's go for it. लेकिन मतलब I won't read too much into the press conference and the words. Come on, he's well spoken. He's an emotional intelligence master's degree मतलब student. I don't see him being that person जो literally means every word what he speaks. हाँ, वो try तो वही करेंगे. And let's see. अरे भाई, he was brilliant, man. Benacer was brilliant, especially वो first hour में, man. Benacer was absolutely awesome in my opinion. अभिषेक, मैंने बताया था. अभिषेक शायद आप लेट ज्वाइन किए थे. हमने एक्चुअली शुरू में थोड़ा बहुत मिलान के मैच के बारे में बात किया था. We spoke about obviously Todd Boehly's interview. Then हमने बात किया था ग्रैम पॉटर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में. Then we spoke about सिटी गेम of course as well as the Real Madrid and of course the Barca game as well. लेकिन हाँ, लिवरपूल का भी क्विकली बताना चाहूंगा. I know I didn't cover it, लेकिन भाई with Liverpool Chelsea not happening this weekend and Liverpool getting a win yesterday, I know Thiago made a huge difference coming back to Liverpool. इसीलिए मे बी आई एम इवन मोर सरप्राइज दैट पॉटर हैजंट यूज्ड ऑल द प्लेयर्स. हमारी जो स्टार्टिंग 11 फर्स्ट 11 स्ट्रांग थी ना. तो क्या लगता है लिवरपूल का चेंज हो जाएगा? मतलब डिड यू सी इनफ इन दैट गेम यस्टरडे कि नहीं यार, दे आर स्टिल लुकिंग नॉट द पार्ट? आई थिंक यस्टरडे एक चांस थी एंड में डेली ब्लिंड के पास जो हो जाना चाहिए था 1-2. अगर वो हो जाता तो आई थिंक वी वुड हैव हैड अ डिफरेंट टॉक, क्योंकि डेली ब्लिंड शुड हैव मेड इट 2-1 आईएक्स और वहीं से गेम बदल जाती. आई थिंक अंकित भाई परफेक्ट परफॉर्मेंस नहीं थी. लिवरपूल वर बैड. आई थिंक अच्छी बात यह है कि जो उनके प्लेयर्स वापस आ गए, दैट्स अ बिग थिंग. अंकित भाई लिवरपूल का मैं यही बोलूंगा जैसे 2 साल पहले भी हुआ था, अगर उनकी लाइनअप पूरी फिट है, आई थिंक कुनाटे वापस आ जाए, जोटा जैसे वापस आ रहे हैं, थियागो अगर 80% ऑफ सीजन फिट रहेगी, आई थिंक देन तो लिवरपूल विल इजीली कम सेकंड एंड चैलेंज इन द चैंपियंस लीग. बट यही है कि अगर ऐसी इंजरीज चलती रही, थियागो इज नॉट फिट, आपके जोटा आउट जा रहे हैं, एंड स्पेशली अगर नूनेस के चक्कर में सलाह टचलाइन को हक करके खेल रहे हैं और वो सेम सलाह की तरह नहीं खेल रहे, फिर आई थिंक इस साइड के लिए प्रॉब्लम होने वाली है. एंड आईएक्स फॉर मी हैज मच एज अच्छा लगा फुटबॉल खेल रही है, दिस इज नॉट द ग्रेट आईएक्स साइड जो हमने देखी है. एंड दे शुड हैव बीटन लिवरपूल. आई थिंक दे वर द बेटर टीम. दे शुड हैव बीटन लिवरपूल फॉर मी. तो मुझे लगता है कि भाई लिवरपूल का वो नहीं होने वाला जो 2-3 साल पहले हुआ था. एंड आई डोंट थिंक लिवरपूल चेल्सी के कैटेगरी में है, टॉटनम, आर्सेनल की कैटेगरी में है, क्योंकि चाहे वो थर्ड भी आ जाए चाहे वो फोर्थ भी आ जाए, दे आर द बेस्ट साइड 10-11 मैच जीतने में. लेकिन यही है, जैसे मैं सिंपल कहूंगा, विल दे बी एबल टू कीप दिस स्क्वाड फिट? अब वो तो इफ एंड बट पे डिपेंड करता है. भाई यार, आई नो मैच शुरू होने में अभी भी 12-13 मिनट बाकी है, तो एवरीवन भाई गेट इन द कमेंट्स. लेकिन ये चीज मैं दिखाना चाहूंगा, टॉक अबाउट इंग्लिश बायस और इंग्लिश डबल स्टैंडर्ड्स ना. आई नो गैरी नेविल इज इन द मतलब हॉट सीट में अभी लिटरली. क्लॉप को भी यार पूछा गया, मैंने दिखाया था इन द अर्ली पार्ट ऑफ द स्ट्रीम. भाई रियो फर्डिनैंड का एक पुराना ट्वीट मिला है, बेसबॉल ऑल स्टार गेम टुनाइट, टीवी कवरेज इज क्वालिटी, वी नीड अ प्रीमियर लीग ऑल स्टार गेम टू to pass that be let's talk plus develop this. wow. तो भाई मतलब श्रेय, आई नो दैट हम कल्चरली इतना आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन मतलब
एज अ फैन मतलब आर यू सीइंग दिस गोइंग द डायरेक्शन ऑफ सुपर लीग? टॉड बली ने वो मना किया नहीं, वी डोंट नीड अ सुपर लीग, चैंपियंस लीग इज ऑलमोस्ट दैट इटसेल्फ, तो हम वो नहीं चेंज करना चाहेंगे। लेकिन ये एक चीज है जहां पर प्रीमियर लीग बहुत सारा पैसा बना सकती है, नॉट दैट दे आर मेकिंग ऑलरेडी टू मच मनी। तो वेयर आर यू ऑन दिस? एंड ऑफ कोर्स मैं इसलिए वापस से शेयर कर रहा हूँ बिकॉज आई वांट एवरीवनस ओपिनियन इन द चैट इन टर्म्स ऑफ द टीम्स भी, नॉट वर्सेस साउथ। तो सब लोग बता दीजिए आपके टीम्स क्या है। श्रेय, व्हाट आर व्यूज जनरली अबाउट दिस ऑल स्टार गेम? आई थिंक ओवरऑल अंकित भाई द स्टेटमेंट जो आज गिरी नेवल ने निकाली वाज वेरी बैड। मैं उस पर बस कमेंट नहीं करूंगा, बट वेरी डिसअपॉइंटेड जो उन्होंने स्टेटमेंट निकाली। यू शुड नॉट जर्नल एज अ कंट्री, सो दैट्स रॉन्ग इन गिरी नेवल पार्ट। आई थिंक जैसे लाइनअप अंकित भाई पे दिखाई है, आई थिंक व्हाट्स द बैड इन दैट, लाइक दिस इज अ गुड मैच। आई थिंक मैं क्रिकेट का, अगर क्रिकेट की भी मैं एक चीज बोलूंगा, मैं एशिया 11 वैसे अफ्रीका 11 मिस करता हूँ जो हम बचपन में देखते थे। दिस ऑलवेज अ गुड पार्ट ऑफ दिस। आपके छोटी टीम्स भी खेलेगी, जैसे कितनी अच्छी टीम आपने बनाई है। मैं तो बल्कि ये कहूंगा ये टीम भी मुझे अच्छी नहीं लगी जो ये स्काई मेरी स्पोर्ट्स ने टीम बनाई नहीं है। है, ESPN की, पहले बोल देता हूँ मैं, हाँ नहीं ESPN वो नीचे मेरे को लिखा पता हुआ है है। ESPN के। मैं चाहूंगा कि छोटे क्लब के भी प्लेयर्स इन्वॉल्व हो, टोनी खेले, वो खेले, जैसे मिट्रोविच, केन, अच्छा मैच होगा, सारे फैंस इन्वॉल्व होंगे। व्हाट्स द बैड इन दैट? राइवलरी अपनी जगह होती है, अंडरस्टैंड, ब्रिटिश में लोग लव टू बी राइवल्स, बट वन मैच वन डे चैरिटी में इज मच बेटर देन सिटी लिवरपूल प्लेइंग इन अ कम्युनिटी शील्ड फाइनल, और दोनों एफर्ट पे नहीं पुट कर रहे, प्लेयर्स रेस्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक अंकित भाई, आई रियली हैव टू से दैट इज अ गुड आइडिया, पर वही है कि उनकी मेंटालिटी भी चेंज हो रही है, एंड व्हेन दैट विल नॉट चेंज एक नया आइडिया नहीं आ पाएगा। या एग्जैक्टली। और भाई जिनचेंको साउथ में क्योंकि आर्सेनल प्लेयर है यार, सिंपल एज दैट, फुटबॉल क्रिक्स। आर्सेनल बेसिकली लंदन इज साउथ। यहाँ पर मैं मैप भी दिखा देता हूँ फॉर पीपल थिंकिंग व्हाई इज इट द केस। यहाँ पे क्लियर मैप है। तो आप लोग, आई नो वी हैव अ फ्यू मोर मिनट्स, हम लास्ट फ्यू मिनट्स में वापस से प्रेडिक्शंस लेंगे, लेकिन बिफोर दैट आई जस्ट वांटेड योर ओपिनियन इन द चैट। एंड यस पीपल, इट्स अ फैन चैनल फॉर ऑल टू सी, सो वी आर डिस्कसिंग लॉट ऑफ थिंग्स अपार्ट फ्रॉम मैचेस जो हो रहा है, जहाँ वी आर ईगरली वेटिंग। लेकिन दिस इज द मैप। आप पता नहीं आप फिगर आउट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, तो लेट मी बी स्पेसिफिक। साउथ में है आपके ब्रेंटफोर्ड दिख रहे हैं मुझे, वेस्ट हैम दिख रहे हैं, आर्सेनल, स्पर्स, चेल्सी, क्रिस्टल पैलेस, फुलम, बेसिकली ऑल द लंदन क्लब्स, ठीक है। देन यू हैव ब्राइटन, साउथहैम्पटन एंड कौन सी टीम है वो, बोर्नमouth है, बोर्नमouth है। बाकी सब नॉर्थ के। तो बेस्ड ऑन दैट आपके टीम्स बता दीजिए यार, मतलब गोइंग बाय दिस व्हाट वुड बी योर टीम। लेकिन अगेन Chelsea is gonna get thrashed today. Wow, RB Salzburg is a strong team and Mount can't play the number 8. As we look at back 4, वो भी center back, I don't know what will happen. Goofy, I don't totally disagree with you, लेकिन getting thrashed I'm not sure। मतलब as much as Aspi को हम कर सकते हैं troll, I think maybe just think about it in a back four again। मैं I'm just trying to think from Potter's point of view, ठीक है। think assuming that back four खेल रहे हैं, देखिए अगर वो बेसिकली बैक फोर में खेलते हैं ना एसपी, he will not get beaten by pace as much compared to when he plays as the right center back in the back three in transition, ठीक है, in 1-2s। that is the thing, क्योंकि बैक फोर में he can stay back, ठीक है। secondly if he plays right back तो पूछो ही मत। I think we have enough, मतलब इतना गाली दे चुके हैं, even me being a huge ASP stan, तो that is the sole reason, logic यही दिख रहा है। लेकिन having said that, he's definitely not better than a Fofana or a Koulibaly or even a Chalobah in that particular position। तो Goofy, maybe they have trained, remember उन्होंने ट्रेनिंग की है लास्ट 72 आवर्स में, and maybe in that training they tried this and ASP was able to maybe keep Aubameyang out। I'm just kind of saying that वो एक होता है ना कि नहीं भाई अच्छा किया है, probably he's done better, so meritocracy दिया है। simply put, maybe he's just giving merit to people who are kind of doing well in training। I'm just putting another point। Okay। yeah, exactly, that happens। evening bro, what's up bro? Talk immune the house people, by chance you're not subscribed to Football Loses Cancer, I tag him in every description, so I do with Chelsea perspective। please subscribe to those channels as well, not just our both channels। and of course what the scoreline will be, just well says, but I'll take a 1-0 win। श्रेय, आपको क्या लग रहा है यार, मतलब are you, मतलब firstly Chelsea needs to win, like I said, Milan has won their game, right? एंड जागरेब के पास 3 पॉइंट्स है, तो मिलान के पास 4 पॉइंट्स है, जागरेब के पास 3 पॉइंट है ग्रुप ई में, एंड 1 पॉइंट है क्या सॉल्जबर्ग के पास, चेल्सी के पास 0 है। तो चेल्सी नीड्स टू विन दिस गेम। सो आर यू ऑफ द काइंड ऑफ कि नहीं, एनीवे इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट फॉर मी, ये सीजन तो एनीवे इट्स मोर लाइक अ बिल्डिंग, आई एम गोइंग टू वांट Chelsea to play good football, or you're like nahi bhai, I need more wins for Chelsea? I think for me, I'm going with 3-0 Chelsea। मैं हैरान नहीं होगा 4-0 भी हो, because I think Salzburg are looking weak on paper। I think Sesko नहीं है, उनके proper center back नहीं है। I think they're looking weak, and I think नया manager bounce दिखेगा, which we always see with Chelsea। जब manager जाता है, players happy,
इंटेंसिटी से खेलेंगे, डिजायर, फाइटिंग फॉर द बैच। तो वो तो मैं चेल्सी के साथ जब से 15 साल से फैन हूँ, मैं इतनी बार देख चुका हूँ कि नया मैनेजर आता है, सडनली बहुत अच्छी ट्रॉफी आती है। अब इस बार आएगा नहीं आएगा, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट आई डू थिंक देयर विल बी रिस्पांस। एंड सैल्जबर्ग फॉर मी आर नॉट एज स्ट्रांग एज इट शुड बी। बेंजामिन सेस्को नहीं है जिससे थ्रेट कम हो जाती है। आई थिंक उनका सेंटर बैक नहीं है प्रॉपर, so that's why I do think it's going to be 3 or 4 and Aubameyang will score at least a brace today for me. Okay, people, we have live coverage now. मेरे पास आया है ना लाइव कवरेज। यहाँ पर बिग शाउट आउट जाता है ऋषभ रस्तोगी को, हमारे सब्सक्राइबर है ऋषभ रस्तोगी। ही इज एक्चुअली एट स्टैमफोर्ड ब्रिज एज थिंग्स स्टैंड, ठीक है। तो बिग अप टू ऋषभ रस्तोगी। और मैं अभी शेयर करने वाला हूँ, दीज आर लाइव ट्रेनिंग यू नो और रादर वार्म अप सीन्स हम शेयर करने वाले हैं। अगेन बिग अप टू ऋषभ रस्तोगी, अगेन एक्सक्लूसिव फुटेज है। तो मैं आई डोंट नो इफ आप लोग देख पाओ, तो दिस इज व्हाट वी कुड गेट पीपल। तो भाई इट्स काइंड ऑफ हैपनिंग अगेन। आई थिंक म्यूजिक ऑन है, तो आई एम जस्ट ट्राइंग ऑफ नॉट गोइंग टू प्ले द म्यूजिक, लेकिन श्रेय, दिस इज लाइक एब्सोल्युटली वंडरफुल यार टू वॉच दिस। I think we'll love to go to Stamford Bridge one day, Ankit bhai. Like this is so beautiful, and मैं hope करता हूँ ऋषभ enjoy करेंगे। And Chelsea बहुत अच्छी victory से जीते, we win by a big margin, and we love Chelsea, up the Blues, and I'm going with a 4-0 Chelsea today. 4-0 चेल्सी यहाँ पर किसका पिच बना लिया भाई ऋषभ, लेकिन अच्छा है, नाइस वन ऋषभ। ऑलवेज गुड टू हैव फैंस शेयर दिस, ऑफ कोर्स। एक फर्स्ट हैंड इट्स ऑलमोस्ट लाइक हमारा वन ऑफ अस हैज एक्चुअली बीन टू स्टैमफोर्ड ब्रिज। आई नो ऋषभ, तो बेसिकली ऋषभ इज अ सब्सक्राइबर एंड डेफिनेटली बीन सपोर्टिंग द चैनल फॉर लॉन्ग टाइम एज वेल। तो भाई ही इज डेफिनेटली देयर, और आप देखिए लाइव सीन्स, ही इज एक्चुअली देयर आउटसाइड द ब्रिज, ही इज टेकन ऑल द पिक्स एंड इज शेयरिंग विद अस। Brilliant stuff here, Rishabh, I must say. Bhai, I hope you like that fact. Again, we try and bring different stuff. 0-0 draw I would take with this team. Derain is going with a 0-0 draw. Interesting that. Okay, 3-0 win. Abhishek is wanting. Sorry for you using word trash. I'm a lot. No, Goofy. I understand totally. I 100% understand. Then you have. अरे डेल बॉय करना टीवी, नाइस टू सी यू ऑलवेज। अगेन पीपल, इनका भी चैनल है। इमेजिन पॉटर प्लेइंग हिज फर्स्ट यूसीएल एंड यूरोपा लीग गेम ऑफ चेल्सी दिस सीजन। ओह माय गॉड गूफी, रियली मैन, कम ऑन, थोड़ा सा हो जाए। नहीं आएगा, मतलब अगेन विद इन आई थिंक 20 सेकंड्स होता है, तो नहीं होता इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं आएगा, नो टेंशन नहीं है। आज टूकल को बुलाया है, साथ में मैच देखूंगा। निखिल, गुड वन। अभिषेक, चलो ब्लू लव एब्सोल्युटली भाई, 4-0 स्टेटमेंट। आई होप चेल्सी के लिए उत्कर्ष, इतना मैं बोलूंगा। आई वांट विन, स्कोर इज फाइन। अगेन आई एम विद राहुल, आई विल टेक एनी विक्ट्री राइट नाउ, बट अगेन ऑलवेज गुड टू हैव श्रेय, ऑलवेज गुड टू हैव एवरीवन इन चैट। भाई जाते जाते भूलना मत, लेट्स गेट द लाइक्स अप सर्टेनली। और हाँ, हमने शेयर किया है ऑल द मैचेस। डू लेट मी नो इन द चैट, अगर कोई मैन सिटी फैन है, लेट मी नो मैन सिटी का स्कोर लाइन क्या होने वाला है अगेंस्ट डॉर्टमंड। लेट मी नो रियल मैड्रिड का मैच का स्कोर लाइन क्या होने वाला है अगेंस्ट लाइप्जिग, and of course Juventus versus Benfica. I think this was the top matches. Of course, congratulations to Milan fans, congratulations hopefully to Chelsea fans. हम बात करेंगे after the stream. And by the way, I think Shrey, आप post stream कर रहे हो ना? Yes, Ankit, I will be doing a post stream of the match. तो चलो भाई, people, you can find the post match reaction live on Shrey's channel. Again, do not forget, big up to 8744 as well. Much love, bro. And again, we did discuss Barca as well. Probably missed it, but big up. Again, let's hope 4-1 to City, 3-1 to Chelsea. Chalo, I don't mind others winning as long as Chelsea wins tonight. Chalo, up the Chelsea, and come on, Potter. It's time for Potter ball. Jo bhi ho, let's support. Of course, I will miss Tuchel. I'll be very honest here. Bye.